I rise to participate on the demand branch under the Ministry of Ports, Shipping and for 2022-23. So, India is strategically located on the world shipping route with a coastline of approximately 7,517 kilometers. Maritime transport handles around 70% of India's trading in terms of value. It has 12 major and 200 non-major ports. As compared with other ports across the world, the numbers are not encouraging in India. Due to the lack of a deep sea port with 20 meters draft, mother vessels coming to India from anywhere in the world has to unload its cargo at transshipment ports like Colombo or Port of Singapore to load them into small ships and then sell it to Indian ports. This puts an extra burden of around rupees 16,000 per TEU. Not just these, all the ports are saturated and this leads to poor functioning. Sir, there have been a sharp indication that the design of existing ports is inadequate to meet the current requirement for quick turnaround and handling of increased volumes. These causes delay in the feeding and evacuation of cargo and productivity of vessels. So there are around 14 institutions providing naval architecture degree to about 700 graduates per year in India, whereas the current country needs about 10 times more naval architecture and shipbuilding engineer per year. It is also predicted that there will be an 8% increase in the demand every year, with many of the students leaving India. The shortage of skilled architects will affect the industry. The intake capacity must be increased and women must be protected in the field. So instead of modernizing the ports, the government's 8 lakh crore Sagarmala project is causing some irreversible damage. Environmental effects on the coast with issues like coastal erosion as well as severe problems of degradation are being noticed. So governments are projecting or highlighting about the Sagarmala project, but the drawback should not be overlooked. Sir, around 352 ports had been identified to be implemented as major ports. A target of 3,200 million tons of port capacity to handle 3,000 million tons of cargo was set to be reached by 2020. But in 2021, the total capacity stood at 2,562.85 MTPA. Not only these, the development of road network, electricity, and overall infrastructural development is also the need of the hour. The port productivity and efficiency also depend upon the quality and reliability of road and rail connectivity and adequate shortage and handling facilities. The lack of expressway connectivity between major ports as well as industrial clusters and high fuel cost make hinterland transportation inefficient and slow. Also, the container freight stations and business need to be organized efficiently through good management practice in space utilization. Sir, India has domestic industries which can produce some of the raw materials required in shipbuildings. Especially, India has competitive steel manufacturing, light engineering, and IT industries, which can offer the required products at economical cost. Thus, this should be boosted. Rather, the minister must highlight the government steps in this regard. Sir, in the 2020-21 budget, the Honorable Finance Minister had announced that by 2024, the ship recycling capacity of the country would be doubled. The minister had asked for a 60% raise in this year's budget in order to fulfill the aim, but the raise is negligible. Rather, the worrying thing is the fact that 48% of Alang's capacity remains unutilized. The main reason is non-compliance with environmental norms. Until and unless that is done, it will never get any ship enter from Europe. And at this rate, the target will never be reached. So rupees 100 crore was allocated towards shipbuilding research. What has been the outcome of the project? And there has been no mention since. Also, the allocation of rupees 100 crore to Sagarmala indicates that government is relying heavily upon the private sector for its implementation, which is unacceptable. So talking about the problem faced by the shipping industry, the ABG shipyard scam comes to the forefront. It is the same company to whom BJP government of Gujarat
had allocated 1.21 lakh square meter of land at Dahej, Gujarat at 100% reduced rate. Despite the adverse report of CAG, the land was sold at 700 per square meter instead of rupees 1400. The company was caught in one of the highest scam, that is rupees 22,892 crore in 2016. But the FIR was lodged very recently in February of 2022. So why the delay? What is the current status of this case? And how is the government planning to bring back the lost amount? I would like to request the Honorable Minister to address this issue in his reply. Along with this problem, the current problem faced by the traders revolves around the ongoing war, as there have been sanctions on the Russian ports which are important to the Indian market. Not only that, huge number of obtaining containers are stuck in Russia, leading to a dearth of the same. Freights rate have gone high. Perishable items of export like fruits such as grapes are getting destroyed. In such a scenario, the traders as well as farmers are severely affected. I would like to request the Honorable Minister to look into the matter and also enlighten the House on the steps taken by the government to combat the effects of war on the shipping and its dependent industries. Over here, I would also like to ask the Honorable Minister whether 21 standard sailors near the Black Sea were rescued or no. This I say so because I didn't get any update regarding the same matter. Sir, the shipping and port industry is plagued with regulatory and permission-related obstacles. Here, I would like to take the opportunity to mention that Government of West Bengal has created a single window channel for all the works related to the non-major ports. Even the Tajpur port, which will be completed within 3 years, due to the sincere effort of our Honorable Chief Minister Mamata Bandyopadhyay, will boost the economy of the state. Sir, similar steps should be taken for the major ports falling under the responsibility of the central government. So, Waterways Authority of India has found 25 out of 111 national waterways fit for cargo or passenger movement. National Waterways 44 on River Ichamoti is one of these. I would like to know from the Honorable Minister about the current status of the construction work of the said. According to the detailed project report, it should have been completed within 24 months since the beginning of the construction. Moreover, there are ferries already running in the areas along Boshirhat and Itinda. So what will be the future of these ferries once waterways is constructed? And once the cargo transportation becomes operational, there is bound to be water pollution. How will that be taken care of? Sir, in 2020-21, share of major ports declined to 54%, while that of non-major ports increased to 46%. Yes. In the upcoming future, the major ports will be handling more cargo, and the government in its 2021 bill is centralizing the power even more. Need of the hour is to decentralize and give the state governments their due share of power for a better future. Sir, with this, I am concluding my speech, and with a thanks to the chair for allowing me to complete my speech. And I hope that Honorable Minister will address my questions which I have raised here. Thank you, sir. Honorable Member Sri Rao Sri Krishna ji. Thank you, sir. Thank you very much. We should all be happy that our economy is in the top 5 across the world, sir. But we should be really concerned with regards to the position of ports and maritime industry, which is standing at 18th in the world, sir. It needs a lot of improvement, because Government of India is talking about PLI scheme, Atmanirbhar Bharat, manufacturing hub. If all these things has to happen, position of ours has to increase, sir, and our facilities in the seaports and marine industry has to increase, sir. Ministry has been allocated 33% less budget, sir, to last year. So when we are saying that this infrastructure has to be increased, I don't know how it is going to be, sir. Even for the Sagarmala projects, which is the flagship of this government, it was only provided 360 crores, sir, while which is a mere 52% of its projected requirements, sir.
For the development of minor ports, there's a huge shortfall, sir. Demand by the ministry was 128 crores. Allocation was only 52.79 crores, sir. India has around 12 major ports and almost 200 minor ports, sir, with combined capacity of 2,400 million tons of cargo, sir. GOA is planning to develop major ports in AP, Telangana, West Bengal, and Maharashtra, but it has been planning for so many years, sir, but nothing has been happening, sir. If we want to make world-class logistics, we cannot dump all the responsibility on the private players, sir. It's easy to dump everything on them and wash our hands off. But GOA India needs to handhold if we are planning for the ports of the future, sir. Coming to the some of the suggestions, because I'm coming from Andhra Pradesh, which has a huge coastline, and some of the suggestions I have, some of the clarifications I need, sir. To start off with the suggestions, Gati Shakti project is evolved, sir, to connect to improve road and rail connectivity, but we need separate plan to develop Gati Shakti to connect all major and non-major ports, sir. Dredging and keeping the channel depths of large vessels is a high-cost exercise, sir. This is one of the major concerns of the persons who are running the seaports, sir. It needs liberal support from the government of India, sir. We see this happening day in, day out in the Vizag port, sir. Because it's one thing to build a world-class port, sir, but you have to operate it at world-class level as well. If that has to happen, this needs to be supported by the government of India, sir. We should plan for more multi-mode logistics, sir, not just by NHA, but also by Indian Railways at strategic locations, sir. It will improve efficiency of our chats. This is another session I want to make. And Pratima Mandal, ma'am, has also spoken about it just now with regards to the mother vessels or mainline container vessels not calling the Indian seaports, sir. Singapore, Sri Lanka, UAE, Malaysia, these are the only countries that are attracting these, sir. Somehow these mother vessels are not coming to India. It is a cause of the concern. Because these are not coming to India, the shipping cost has been increasing, and there's a huge delay in the shipping of these containers as well, sir. And this is the main problem why they're not coming is there's a delay in Indian ports, sir, and there's a draft constraints, sir, high tariffs, sir, high bunkering charges, sir. These are some of the issues that our ministry has to resolve, sir. This will make our imports cheaper and our exports competitive across the world, sir. And this government is talking a lot about the one nation, one card. Recently we have passed a bill combining both Aadhaar card with the voter ID card. And we're talking all of that. But, sir, coming to the ports, there are many different types of service providers in the ports, sir. Be it in government or private ports, such as custom house agents, freight forwarders, stevedores, truck operators, loading and unloading agencies. We should also think of one nation and one registration policy for all these different type of service providers, which should help the service providers to operate in any Indian port, sir. Uniform KYC and registration policy for these service providers should be provided, sir, should be made, and they should all be brought under one platform, sir. I hope the ministry will do it as soon as possible, sir. And we have seen, if you go to the Delhi airport, we see there's a Aero City, and even in the Hyderabad airport, we see a Aero City, but we should also plan for the port cities as well, sir. Development of port cities with the separate industrial and warehouses and residential zones are the need of the hour, sir. These would support the growth of ports in organic and in inclusive manner, sir. There's a talk of the central government is talking a lot about the coastal berths for a lot of years, sir, but nothing has been seen, sir, in the last few years. There's almost 7,500 kilometers of coastal line available in the country, sir. But we need to give impetus to develop coastal belts in all major and non-major ports and increase coastal movement, sir. This is the need of the hour, sir. And also with regards to there's a huge talk. There's a lot of members who have spoken about inland cargo movement, sir. For that to happen, we need to have a barge policy, sir. The barge policy is not evolved in our country. It needs to be evolved, and it needs to be brought out as soon as possible, sir.
And there are another major suggestion is, sir, there are more than 20 ministries of government of India and state governments have to give approvals for the functioning of a new port, sir. The shipping ministry should come out with a single window policy wherein all requisite approvals for smooth operating of a port shall be given in a time frame manner, sir. Other day we were listening to Gadkari ji, sir. He was talking about how he has brought almost 50 services with 50 services under the RTO into the digital format, sir. Maybe ports ministry also will take a leaf out of his book and try to implement it, sir. As a member of parliament from Andhra Pradesh, sir, it is a major demand coming from Andhra Pradesh, sir. This has been a promise made by this house during the state bifurcation, sir. That is establishment of a major port at Dugirajapatnam, sir. But due to the non-feasibility, they have changed the location to the Ramayapatnam, sir. For the construction of the port, AP government has already identified 3,000 acres of land there, sir. We have been requesting it for so many years. We have been pursuing for this for so many years. We request the central government to make the port at Ramayana-Patnam the promise you have made in this house, according to AP Regulation Act, as soon as possible, sir. Thank you very much. Inder, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पतन पोता परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर बोलने का मौका दिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा कि जल यातायात लंबी और छोटी दूरियों के सबसे सस्ता साधन है। प्राचीन समय में समुद्री जहाज भारत का एक बड़ा उद्योग माना जाता है, जिसे पूर्वी समुद्र रानी कहा जाता था। अध्यक्ष महोदय, भारत में क्षेत्र दुनिया के सबसे पुराने क्षेत्रों में से एक है और सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान में मेसोपोटामिया जैसी अन्य सभ्यताओं के साथ ही बड़ा मात्रा में व्यापार किया है। आज भारत में 12 प्रमुख बंदरगाह और 200 से अधिक अन्य बंदरगाह है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मैं संबंधित मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि अधिकारियों के आंकड़ों के अनुसार भारत में जहाज की मरम्मत के लिए 45 ड्राई हाक है, जिसमें 5 प्रमुख बंदरगाह का द्वारा संचालित 9 ड्राई हाक शामिल है। हालांकि देश के 8 प्रमुख बंदरगाहों में से कोई भी ड्राई हाक सुविधा नहीं है, जिसमें मोरमुगांव पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, न्यू मंगलोर, चेन्नई, कामराजर, वियोग, कलकत्ता बंदरगाह के चिंदबरनार और हरदिया शामिल है। तो मैं मंत्री जी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जे 8 प्रमुख जो बंदरगाह जो है, उसमें जो ड्राई हाक जो सुविधा नहीं है, वो सुविधा करने से मैं आपसे मेरी विनती है। अध्यक्ष महोदय, ड्राई कॉम्प्लेक्स 2019 में से वैश्विक नौसैनिक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 1.89 थी। भारत के जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत उद्योग 2019 और 20 के आंकड़ों के अनुसार आज भारत में 30 शिपयार्ड है, जिसमें 7 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है और 23 जो निजी क्षेत्र के है। हालांकि 9009 से अधिक सरकारी आदेश सार्वजनिक क्षेत्र से शिपयार्ड को दिए गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने जहाज निर्माण के लिए उद्योग पर एकाधिकार वहां पे स्थापित किया है, जिसका परिणाम स्वरूप निजी क्षेत्र के व्यवसाय को वंचित कर दिया है, जिस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, जब जहाज की मरम्मत की बात आती है तो निजी क्षेत्र के शिपयार्ड सामान्य रूप से अधिक कुशल पाई जाती है। ऐसा क्यों, इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि निजी क्षेत्र को ज्यादा मतलब फैसिलिटी दी जाती है और जो सार्वजनिक क्षेत्र को हो, जिस तरह से उसको बढ़ावा देना चाहिए, दुर्भाग्य से उसको बढ़ावा नहीं दी जाती है। वर्तमान में भारत में 700 से अधिक स्वदेशी जहाज निर्माण कंपनियां हैं। हालांकि आज भारत की जहाज निर्माण क्षमता का उत्पादन वैश्विक जहाज निर्माता उत्पादन का सिर्फ 0.045 है। इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय,
समुद्री परिवहन की समीक्षा को देखते हुए नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में छोटे बंदरगाहों द्वारा संचालित संयुक्त मात्रा में जनवरी 2022 में सालाना आधार पर 9.3%, दिसंबर 2021 में 12.96, नवंबर 2021 में 9%, अक्टूबर 2021 में 8% गिरावट आई है। इस पर भी मंत्री महोदय ने ध्यान देने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, कोकण सहित महाराष्ट्र में विभिन्न भागों में पत्तनों के विस्तार हेतु ठोस नीति एवं धनराशि आवंटित किए जाने की आवश्यकता है। सागरमाला कार्यक्रम के तहत कनेक्टिविटी बढ़ाने हेतु स्थलीय राज्यों के समुद्र नदियों राज्यों के बंदरगाह जैसे जोड़ने हेतु ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग से लेके यहाँ से पालघर जो मेरा मतदार संघ है, वहां पे कई जगह पे वहां जेटी और जो अपना डिफेंसिव वॉल की बहुत आवश्यकता है, और ताकि जो कोकण के भागों में जो पतनों के विस्तार हेतु वहां पे जो धनराशि दी जाती है, काफी कम देने के वजह से वहां पर जो सुविधा होना चाहिए वो दुर्भाग्य से नहीं होता है। अध्यक्ष महोदय, जब हम पतन परिवर्तन की बात करते हैं तो हम यहाँ उल्लेख करना चाहूंगा कि हमारे देश में कुल 3 तरह से यातायात किया जाता है। अंतर्देशीय जल यातायात, इंडियन वाटर ट्रांसपोर्ट, तटीय शिपिंग, कोस्टल शिपिंग, और तीसरा जो है भारत में बंदरगाह मतलब पोर्ट्स ऑफ इंडिया। तो अध्यक्ष महोदय, अंतर्देशीय यातायात जल यातायात प्राचीन समय से भारतीय यातायात प्रणाली में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आ रहा है। इसकी लंबाई करीबन 14,545 किलोमीटर है तथा गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, इन सभी नदियों में से जहाज द्वारा यातायात करते आए हैं। अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र राज्य के विभिन्न भागों में जल मार्गों की धनराशि आवंटित करने की आवश्यकता है। इन सभी जल यातायातों का कार्य शीघ्रता से पूरा किया जा सके। जैसे कि अध्यक्ष महोदय, हमारे महाराष्ट्र में नवी मुंबई से लेके ठाणा जो है, कांडला बंदर है, और वसई विरार जो क्षेत्र जो है, वहां पे करीबन वहाँ ज्यादा ट्रैफिक होने की वजह से कम साहब 3 या 4 घंटा मतलब वहां पे जो मतलब ट्रैफिक में लगता है। तो नवी मुंबई से लेके यहाँ से वसई विरार तक करीबन एक मतलब आधा घंटा में हम वहां पे पहुंच सकते हैं, लेकिन वहां पर जो जल सुविधा होनी चाहिए वो जल सुविधा न होने से वहां पे काफी दिक्कतें होती हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं अंतर्देशीय जल परिवर्तन में सुधार के लिए शुरू की गई विभिन्न योजना परियोजना के कार्यों को समय पूरा किए जाने हेतु कोई ठोस नीतियां अपनाई जाने, इस योजना का जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। मुझे विश्वास है मंत्री जी उसके ऊपर आप ध्यान दें। अध्यक्ष महोदय, भारत की एक बहुत बड़ी तटीय क्षेत्र रेखा है। वर्तमान में 12 मुख्य बंदरगाह है और 184 छोटी कार्य योग्य बंदरगाह के तटीय क्षेत्र के साथ भारत में मुख्य बंदरगाह है चेन्नई, कोचीन, इंदौर, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, कांडला बंदर, मरगुमाओ, मुंबई, न्यू मंगलोर, पारादीप और विशाखापट्टनम में। अध्यक्ष महोदय, मैं यहाँ उल्लेख करना चाहूँ कि महाराष्ट्र राज्य के कोकण सहित सभी प्रमुख बंदरगाह को निजी बंदरगाह को जैसे कुशल बनाए जाने हेतु कोई नीति अपनाए जाने की आवश्यकता है, जिस पर भी मंत्री महोदय ने उसके ऊपर विचार करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आपके माध्यम से मेरी अपना मंत्री महोदय से विनंती है कि मेरा मतदार संघ में जो सातपाटी बंदरगाह छोटा बंदर है, वो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा फिशिंग एक्सपोर्ट किया जाता है। तो मेरी मंत्री जी से रिक्वेस्ट है कि वहां पे एक छोटा बंदरगाह होने की बहुत जरूर है। अध्यक्ष महोदय, मैं अंतर्देशीय जल यातायात अब कार्यात्मक समस्या का सामना कर रहा है। पोतों की मुक्त आवाजाही कारकों के उथला पानी, तंग चौड़े चैनल, 2 मिनट सर, स्थायी गाद और किनारों का कटाव, नौवहन सहायता का अभाव, भारत और बांग्लादेश के बीच समझौता का अभाव से इनके बीच नदियों में मार्ग को लेकर होने वाले झगड़े, जिस पर मैं चाहूंगा कि सरकार इसके ऊपर सही ढंग से ध्यान दे। अध्यक्ष महोदय, पुरानी पोतों के आधुनिक के प्रति अब
अपर्याप्त मात्रा में साधन की अनुपलब्धता और राशि की कमी के कारण रुके हुए कार्य को पूरा किए जाने हेतु आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है। वैसे ही अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र राज्य के अकार्यशील और निष्क्रिय नदीय पथों को पुनर्जीत करने या नदी पथों के विकास हेतु ठोस नीति अपनाए जाने की आवश्यकता है, जिस पर मंत्री जी Please ने ध्यान conclude. देना चाहिए। Please conclude. धन्यवाद। Thank you. Honorable Member Sri Alok Kesman. धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे डिमांड फॉर ग्रांट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज फॉर 2022-23 पर बोलने का मौका दिया। महोदय, भारत या किसी भी देश के विकास के लिए समुद्री महत्वपूर्ण राष्ट्र है। यह न केवल सामाजिक बल्कि विकास करने के लिए भी आवश्यक है। महोदय, पोर्ट शिपिंग और जलवायु मंत्रालय के कार्य क्षेत्र में शिपिंग, शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर, शिप पोर्ट्स तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय वाटरवेज शामिल है। महोदय, भारतीय बंदरगाह बुनियादी ढांचा संरचना के विकास और माल ढुलाई आवाजाही के मामले में काफी पीछे है। सकल घरेलू उत्पाद में जहां रेलवे की हिस्सेदारी लगभग 9% है और सड़क परिवहन की हिस्सेदारी 6% है, वहीं बंदरगाहों का हिस्सा लगभग 1% है। वर्तमान में देखा जाए तो भारतीय मात्रा की दृष्टि से देश के निर्यात पर व्यापार का 90% से अधिक हिस्सा संभालते हैं। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए बंदरगाहों के बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए सरकार ने वर्ष 2017 में सागरमाला परियोजना की शुरुआत की। सागरमाला परियोजना देश की 7500 किलोमीटर लंबी समुद्री तट रेखा के आसपास बंदरगाहों के इर्द गिर्द प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विकास को बढ़ावा देता है। साथ साथ 14,500 किलोमीटर जल मार्ग के ट्रेड रूट को भी सभी कठिनाइयों को दूर करने में अहम रोल निभाता है। माननीय महोदय, सागरमाला प्रोग्राम के 500 प्रोजेक्ट को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से 143 प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है और 190 प्रोजेक्ट्स का काम प्रोग्रेस में है तथा 167 प्रोजेक्ट्स को वर्ष 2035 तक पूरा करने का लक्ष्य है। अतः महोदय, डिमांड फॉर ग्रांट्स फॉर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग एंड वाटरवेज का अनुमोदन इस सदन से आवश्यक है। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज देश के सभी क्षेत्रों में मजबूती के साथ विकास हो रहा है। आज हम फिशरीज, शिपिंग, टूरिज्म, डीप सी माइनिंग, ऑफशोर एनर्जी रिसोर्सेज, मेरीन रिसर्च, ओशियन कंजर्वेशन और ओशियन साइंस के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी सामने खड़ी है, जिसके विकास हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं विकास करके। महोदय, आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में मैरी टाइम इंडिया विजन 2030 के शुभारंभ की है, जिसमें अगले दशक में मैरी टाइम सेक्टर द्वारा प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों के साथ साथ प्रत्येक हितधारक से संबंधित रणनीतियां शामिल है। वर्तमान में देश के पास लगभग 13 मिलियन संयुक्त टन भार के साथ देश जाने वाले और तटीय परिचालनों में लगे हुए 1493 जलयानों का बढ़ता हुआ वाणिज्यिक समुद्री बेड़ा है। देश का विदेशी व्यापार मात्रा के संबंध में लगभग 95% समुद्री परिवहन के माध्यम से वहन किया जाता है और इस सामान का लगभग 92% विदेशी ध्वज वाले जलयानों द्वारा वहन किया जाता है। व्यापार और विकास पर यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस द्वारा समुद्री परिवहन 2021 की समीक्षा के अनुसार डेड वेट टनेज यानी जहाज जितना वजन ढो सकता है समुद्र में भारत का स्थान विश्व में 19वां है और हम विश्व डेड वेट टनेज के लगभग 1.25% के हिस्सेदार हैं। इस वर्तमान में डिमांड फॉर ग्रांट्स के इन पहलुओं पर भी ध्यान देना आवश्यक है। महोदय, भारतीय पोत निर्माण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा के लिए सरकार ने कई बड़े बड़े कदम उठाए हैं। सरकार ने 10 वर्षों के लिए 2016 से 2026 के बीच भारतीय शिपयार्डों को पोत निर्माण वित्तीय सहायता नीति का अनुमोदन की है। भारतीय शिपयार्डों को वर्ष 2016-17 से शुरू करने से कम 10 वर्षों के लिए उचित मूल्य जो भी कम हो
के 20% की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वित्तीय सहायता की यह दर प्रत्येक 3 वर्षों में 3% तक घटाई जाएगी। इसके लिए सरकार ने 4,000 करोड़ रुपए का बजट अनुमोदित किया है। महोदय, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे को प्राप्त करने के लिए आज देश में प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय योजना को शुरू किया गया है, जिसके 7 इंजन हैं। वह है सड़क, रेल, हवाई अड्डे, पतन, सार्वजनिक परिवहन, जल मार्ग और लॉजिस्टिक के जरिए देश के विकास की ओर बढ़ना है। प्रधानमंत्री गति शक्ति लोगों, किसानों, मछुआरों की सहायता और भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा। माननीय सभापति महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र गोपालगंज के नारायणी रिवर फ्रंट की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं, जो गंडक नदी के किनारे डुमरिया घाट पर है। अगर सरकार नारायणी रिवर फ्रंट गोपालगंज के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देती है तो यह एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल बन सकता है। अध्यक्ष माननीय महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह भी आग्रह करता हूं कि बिहार की पटना में मां गंगा से संबंधित सभी लंबित परियोजनाओं को टाइम बाउंड मैनर में पूरा किया जाए। मैं इन्हीं आग्रह के साथ मैं डिमांड फॉर ग्रांट्स का सपोर्ट करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं महोदय। धन्यवाद। Honorable member Sri T. Mohammed Bashir. Sir, thank you very much. Sir, this maritime transport, ports, shipping and waterways, inland navigation, and all these things are foremost pillars of the socio-economic infrastructure of this nation. That's why I'm quite happy in participating in this discussion. Sir, with regard to port, Vizhinjam Port is in our state. It is coming up. Work is in progress. Of course, there was some problem with connectivity with the NH. Honorable Minister intervened in that, and finally it has been settled nicely. Things are progressing. I humbly submit that more expeditious action should be taken with regard to the completion of this project. And sir, now the other thing, Ponnani Port is in my place. It is encircled with certain formality kind of things. It is a private participation also. There are some hurdles, Minister may be aware of it. I hope that we will attend that also. Sir, with regard to certain suggestions, with regard to port, number one, establish strong linkage with private ports and ports under government, that is major or minor ports. And this linkage will have a lot of benefits. Joint ventures can be done and many things can be done in this. The other thing is, sir, second point, optimum utilization of unutilized land with the port. That's an area which we have to work a lot. Sir, even experts says that the joint venture can be done there also. Even solar energy generation, that kind of things also can be done in this unutilized land or the this thing. Similarly, sir, with regard to new ports, all are demanding for that, and of course there are that is our ambition also. But what I would like to say is that we have to give a priority for the development of the existing ports, sir, because we know that a lot of challenges are taking place. International competition is taking place with regard to ports. In that way, increasing the depth of the major port, existing port, that's what I'm saying. All this kind of improvement should be done as far as the existing ports are concerned. We must give a priority for that also. My next point is, sir, connectivity of the port to rail and road. So that's a very important thing. Unfortunately, that is not taking place, sir. Ministry of Sports, Ports, Shipping and Waterways, once in a report they said that out of 98 road connectivity projects, only 13 projects have been completed. Out of 91 rail connectivity projects, only 28 projects have been completed so far, as correctly pointed out by the committee. So what I'm saying is, we must have a dedicated mechanism in this regard. Because sir, without a road connectivity, accessibility, or rail connectivity, the real purpose of the port can be saved. That is to be done. An importance should be given to that also. Similarly, sir, the potential for shipbuilding and ship repair,
That also may be given due consideration. Then my next point is, sir, our potential for cruise tourism. We are having near about 7,517 kilometers of coastal belt. There, this kind of tourism we can develop very much. Honorable Minister and everybody may be aware, in the Scandinavian countries, they are making a lot of wealth out of this kind of things. We are having enough potential. What I'm suggesting is optimum utilization of this kind of thing should be encouraged, and we must take emergent steps in this regard also, sir. Sir, when I am talking about this port and other things, inland waterways, Honorable Chair also may be knowing that we are all having a lot of thing in this. Now, what is happening, sir? Whether it is waterways in the states or the national level, there are many hurdles, sir. The main thing is all these waterways are under different kind of pressure. What I'm saying is there's a new type of crime, that is water crime. When I say that, water crime, the terminology, when I'm using that terminology, you may ask, what exactly is water crime? Sir, what is happening in our sea? Our sea is roaring with sorrows. Sea pollution is taking place. Whether it is oil kind of things, and whatever it may be, its quality maintaining is a very important thing, sir. Sir, our rivers are really dying inch by inch. That also is a concern. Similarly, sir, the beautiful face of our backwaters, lakes are becoming ugly because of the pollution. Than any other member, you may be knowing, sir, our Kerala tradition, our backwaters, there are enough potentiality there. Sir, Kerala's ABC is A for Ayurvedic, B for backwaters, and C for culture. There also we can see this kind of things. Yes. I have sea pollution, I told, sir. Kindly give me some few minutes, sir. I will sea pollution. It's a plastic. Sir, this one day our sea can be called as what is called plastic ocean like that. That also is happening this way. Sir, in this waterways, all kind of pollution, toxic, hazardous chemicals, chromium, metal, pesticide flowing from the agricultural field, lead, mercury, magnesium, dirt and silt, all these things are flowing and it's getting polluted more than. Sir, our river. Sir, recently I read an article. Title of the article is what? Yamuna is not a river, but it's a dirty tree. Things are taking place in that way only, sir. So what I'm suggesting is purification and quality maintaining of this wealth, the blessing of the God, that is to be done with due care. Sir, our country is proud of saying that all ancient civilizations have been grown in the bank of the rivers. But this kind of things are taking place, and we must have a control over that. Man-made calamities is happening, sir. Until and unless we address this issue, we cannot solve the issues as we expect. There coming one more thing, sir. In Kerala, we are having near about 46 rivers. There are also many things are there. A river regeneration is taking place. Well, that's good. Sir, I am representing Panani constituency where Bharatapura is running, Nala is running. I humbly request the Honorable Minister to take care of that. In the rejuvenation program of the river, Bharatapura also may kindly be included. Towards the end, sir, I would like to say only one thing. Deep sea fishing policy of the government. So it needs to be reconsidered. There are a lot of anxiety among the fishermen. I humbly request the minister to think about that loudly. This ministry has a role of a guardian in the sea. Fishermen's interest, that also is coming under this ministry. Of course, fisheries ministry is there, but there it has got a prominence in this. So my suggestion is only this. We must dedicate ourselves to protect all these goals. With all these wishes and prayer, I conclude my speech, sir. Thank you very much. Thank you very much. Honorable Member Shri Anu Mohan. Thank you, sir. So on behalf of my party, Biju Janata Dal,
I would like to appreciate the innovations and interventions in the field of shipping, ports, and waterways, and their need for their continuous development, as they play a pivotal role in economic development of a nation that has a coastline of about 7,500 kilometers, sir. I would like to go back in history and highlight how old our maritime roots are. It dates back to the Harappan civilization, sir. Vedic texts have several references to naval and commercial expeditions and sea voyages, which our ancestors undertook. Indian ships in the ancient times and sea voyages, which our ancestors undertook. Indian ships in the ancient times sailed to the distant shores of Africa and Arabia in the west and harbors of Southeast Asia in the east. In fact, sir, that ancient eastern coast trade route is still celebrated in the form of Bali Yatra in my state, Odisha, sir. I would like to highlight a few important issues and bring them to the notice of the ministry so that sustainable growth, inclusive development, productivity, enhancement, increased logistical connectivity, and financing of investments is taken care of. While the emphasis on PM Gati Shakti and the government's national master plan for multimodal connectivity is laudable, the current budgetary allocation seems misaligned with this intent, sir. The demand for grants for this year has not grown much from the last year's allocation. A tepid increase of just rupees 7 crore overall from the 1,702 crores in the budget estimate last year to the 1,709 crores this year. So this brings forth the concern that the ministry is perhaps somewhere failing to consistently utilize the funds being allocated to it, sir, which is leading to lower and stagnant budgets year after year. As a global superpower, our port connectivity and water-based infrastructure is as important as our roads and other infrastructure, sir. To that extent, a stagnant budgetary allocation does not correctly represent India's ambition as a water superpower and should be improved in certain areas. Sir, I would like to list some of them through you before Honorable Minister, sir. So, Sagarmala program, our government's flagship project to improve logistics across the country and to use waterways and develop coastlines to facilitate the movement of goods at minimal cost, has not been given the boost required to truly propel its growth. The demand for Sagarmala grants and capital expenditure is merely rupees 412 crores, sir, which is barely more than a revised estimate of last year. Similarly, out of the 44 projects under Sagarmala, no funds have been issued for 31 projects. Such delay in issue of funds will lead to inefficiencies, which will only further increase the cost in the future. With such limited resources, the ministry will be forced to act more conservatively, which may stall the growth and progress and evolving fast-paced infrastructure that Sagarmala set out to achieve. This brings me to another point under this topic, sir. So there has been no demand raised for allocation of funds to the Sagarmala Development Company. Even in the revised estimates of last year, rupees 100 crore had been allocated to SDCL. SDCL has been involved in various strategic investments of the government in the past, and even now has been entrusted by ministry to focus on conducting detailed studies to suitably modify the national perspective plan for CEZ, which is Coastal Economic Zones. No investment in SDCL further shows the government's reluctance to use the entity to create SPVs and speed up the process of achieving the goals Sagarmala has set out to do. So my second point is minor ports and R&D funds. Our country has a vast coastline, and uniform progress of the goal of Gati Shakti can only be seen if minor ports are given equal weightage of attention as the other ports in the country are being. They already face tough competition from private ports, and now considering that the budget demand for improvement of minor ports is nearly zero, sir, a sharp drop off from last year's allocation. Where the B was nearly rupees 134 crore, minor ports are likely to come under
considerable hardship, sir. The budget could have been used to further modernize these ports and make them important logistical bases in the connectivity scheme. Earlier little piece masters in the jigsaw and ignoring our minor ports may be a crucial miss by the government. This problem is intensified by only a token demand of rupees 1 crore for research and development of ports, while we all know that investing in cutting-edge research and best practices is the hallmark of any growing economy. This problem is echoed in the case of shipbuilding R&D, as while BE 2022-23 is 11 crore higher than the RE 2021-22, yet still 38 crores less in comparison to the actual expenditure in 2020-21, sir. I hope more funds are allocated under these headings, as it will only bolster the system and keep us modern and in line with global development. The government needs to ramp up finance for research and development across the industry, sir. So decrease in IEBR for Paradip Port Trust. So for the last few years, Paradip has given the authority, the port has given the authority to raise their own capital resources, market through IEBR, which is internal and extra budgetary resources. However, the allocations for this, especially in the case of Paradip Port, has decreased from rupees 206 crore under actual expenditure of 2021-22 to only rupees 162 crores under the current demand, sir. Paradip is one of the best and most functional and active ports in the entire country. As clear from cargo growth and its corporate social responsibility contributions, which have been increasing years after year, sir, as still one of the fastest growing ports and one that handles a bulk of the cargo on the eastern seaboard, providing more headroom in the form of increased IEBR, could have allowed the port to grow further. So my next point is delay in obtaining environmental clearance. This is very, very crucial, sir. A vast number of projects sanctioned in 2018 are still awaiting EC. And even projects sanctioned in 2016-2017 are yet to begin the process as of 2021. I urge upon the government through you, sir, to intensify efforts on this front while maintaining all environmental standards so that the benefits of sustainable development are achieved. So the next is increase in cargo handling capacity without increase in traffic handles. In the past few years, we have been very successful in increasing the cargo handling capacity of both major ports and non-major ports also. In fact, cargo handling capacity of major ports in the country has increased about 79% between the years 2014, 2015 and 2020 and 21, with an annual growth rate of 10.2%, while non-major ports have increased by about 52%. However, this rapid increase in the cargo handling capacity has not been reflected in the actual traffic being handled at the ports. There has been only a minor increase in traffic handles. For instance, in major ports, only 16% between 2015, 2016 and 2019, 2020. And in non-major ports, around 30% between 2015-16 and 2019-20. To further the same example, sir, while the capacity of major ports in million tons per annum has increased from 700 tons approximately in 2011-2012 to more than 1,500 tons in 2020-21, the traffic in million tons has remained at around 600 tons, more or less the same figure it was 10 years back, long back, sir. The government should bring in new policies to ensure that ports and their available capacities are promoted, incentivized, and fast-tracked so that maximum capacity available is used on a regular basis. Some other crucial points, sir, I'll finish very quickly, sir. Only about 63% of the funds allocated on the head capital outlay on inland water transport for financial year 2021 and 22 have been spent till 7th February 2022. Out of the RE 2021-22 allocation of rupees 410 crores under the head Directorate General of Lighthouse and Lightships, the ministry has only been able to spend rupees 280 crores, that is about 68% Yes. of the total allocation till 7th of February. Yes. So the financial allocation under National Oil Spill, Disaster Contingency Plan and Green Port Initiative is unclear. I'll conclude, sir. So this is something, sir, which I would like to end with a very special and genuine
request on behalf of 4.5 crore Odias and my party Biju Janata Dal. So not directly related, although, to the demand for grants, but I want to request, which I have been saying again and again in this house, and many of my colleagues, both in Rajya Sabha and Lok Sabha, have repeatedly have been saying this. So I would like to request Honorable Minister through you of Ministry of Shipping to rename the Paradip Port after legendary Biju Patnaik, sir. Sir, Paradip Port is the brainchild of late Sri Biju Patnaik. He envisioned it as the gateway to Odisha's prosperity. He faced immense struggles like non-availability of road communication, electricity, and rejection of proposal by Planning Commission for building an express highway connecting mining areas of Keonjhar and Sukinda. Determined Biju Babu Yes. had an inward. Yes, sir. I'm concluding, Please. sir. Concluding, sir. Thank you for giving me a lot of time to speak, sir, because this is really very, very genuine matter. And particularly this matter is very emotionally connected to Odisha, sir. And I'm sure everyone will agree with me. It is Biju Babu cannot be limited within Odisha only or India. He's an international figure, a daredevil. So he braved immense struggles like non-availability of road communication, electricity, rejection of proposal by Planning Commission, and determined Biju Babu had an inward impelling faith that once the construction of the port and expressway was completed, he could influence the center to convert them into central projects. That it did and could. Such was the daredevil spirit of our legendary Yes. Biju Babu. He has immensely contributed to the freedom struggle and ushering in development through industrialization in Yes. India. As the chief architect of modern Odisha, he has founded many innovative projects, including Paradip Port, which has become one of the largest ports in the Okay. country and #1 handling cargo in 2020. From 2008, we have been requesting the Union Ministry for this tribute. Against all odds, Biju Babu created the Paradip Port. Renaming it after him would be a befitting tribute to him. Odisha's rich maritime history and honor sentiments of 4.5 crores ODI. Okay. So please, it's an humble request through you with folded hands, sir. Kindly let us not delay this request. We have been demanding for Bharat Ratna for Biju Babu. We have been demanding for the renaming of Francis Paradip Sargane- Port in the name of Biju Babu since many Sri years. Francis Sargane- I request Honorable Minister would really feel comfortable Please. to answer this on this while he's replying. Thank you so much. Jai Hind, Jai Jagannath, Vande Utkal Janani. Sir, I must thank you in the first place that you gave me an opportunity to take part in this important debate. Sir, Goa is a small state, and there are 4 important rivers. Out of that, 2 rivers come in my constituency. We have got one major port, which is out of the 12, that is Marmagoa Port. And we have got Panaji, a minor port out of those 200 minor ports we have in India. Sir, my colleagues have raised various points on these issues. I would like to confine only to my state of Goa. What I find of late is astonishing. Center is usurping the powers of the states and local bodies. Center should not encroach upon the powers of the local body. In fact, Center has created a state within the state of Goa. Sir, to cite an example, the union government has recently constituted a new board of Major Port Authority for Marmagoa Port. No consultation whatsoever has been made with Goa government. This shows the authoritarian streak of the central government. This is certainly not acceptable. This is a blatant move to diminish the powers of the state and the Marmagoa port. This process is aimed at ensuring local laws redundant within its jurisdiction. How can the state forego its domain and powers that are there under its domain and discretion? This act of the union government also aimed at renaming and replacing the Port Trust of 1963. Sir, most of our rivers are navigable to the point they rise.
Goa being a small state, port trust or Marmoko port is very important for us. Earlier, all the iron ore used to be exported to that. And today, though iron ore is not there, a lot of passenger boats used to come to the harbor. Also after COVID-19, the passenger boats are not there. Today, we are mostly exporting our pharmaceutical goods that are normally manufactured in the state. But what happened is, there are so many jetties in the Marmagao port, and these jetties have been given to the private sector. Today, what is happening? We are importing lot of coal in the state, which people don't want. And I, as a member of parliament, I'm also against, because right now we know in the world, India has got 35 out of the 50 most polluted cities, and we don't want to add one more. We don't want Vasco, which is totally populated. We don't want that to be the 36th polluted town or state or city in the world. So we want coal not to be stopped, but we don't want our Marmagao port or Goa to be a coal hub, because Goa is a touristic place. Lot of tourists come and visit Goa, and because of this pollution, I'm sure it will tell on the tourism of the state. Sir, what is totally bad for the state is that the jurisdiction of the port has been increased from the port to one Betul. All our beaches in the south, nothing can come up there without the permission of the port trust. Normally what happens in Goa, soon after rains, people are given shacks on the shore, little inside, for tourism. So this time, when the government gave them permission, the port trust or the authority objected, and then it was delayed. Then government came forward and didn't refer it to them, and it went ahead, and the shacks permission were given. What I want to tell is, so this thing just started, it will continue. So my request, again, in the interior, from the port, there's one about 10 kilometers inside. There's San Jacinto Island, which is totally populated. Now the jurisdiction of the port goes from the port to on the eastern side to the San Jacinto Island, and on the southern side, it goes up to Betul. In between, there are so many beaches that come. Again, there's a fight between the local bodies and the port trust, or now the new port that has come. What I want to tell you is, sir, as it is, the income of these local bodies is very meager. And tomorrow, if all this is usurped by the authority, they will not be able to function at all. Second thing, now this port, Marmagao port, comes in the jurisdiction of the Vasco municipality. Today they can build anything inside, we don't mind. But just beyond also, they don't need permission of the municipality. This is totally wrong. So what will happen is, some other instructions will come, something else will come, and the state will not be aware at all. So my request is that, as in my case, it comes in my locality as a South MP of the South. Many other MPs must be also facing the same thing. Today, there's no representation in the authority for any local person. So if it comes in the area of the certain MP, that MP should be put in that authority, so that tomorrow, whatever happens, the state is aware, because it should not be against the interest of the local people, because the MP is representing lakhs of people in that state. Second thing,
Also, 2 members of the state should be included there. Because whatever is happening, the state should be aware so that they also safeguard the interests of the state in whatever expansion that is taking place. And third thing is, when Porters was there, a lot of local people were getting employment. Now with this authority, and also, sir, with this authority, and after so many jetties have been privatized, there will not be employment for the locals. So I will request the Honorable Minister to take this into cognizance and please see that the interests of the local people are maintained. Thank you, sir, for giving me this opportunity. Thank you. Honorable Member Janatan Singh. माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने मुझे पतन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय के अनुदानों के मांगों पर बोलने का आपने अवसर दिया। महोदय, मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, माननीय वित्त मंत्री जी और इस विभाग के माननीय मंत्री और राज्य मंत्री जी को भी मैं बधाई देना चाहता हूं कि आप जल परिवहन को और आसान, सुगम बनाने के लिए लगातार आप प्रयास कर रहे हैं और जिसका लाभ आज भी और आने वाले दिनों में भी व्यापक स्तर पर, खास कर करके जल मार्गों के किनारे बसे हुए बस्तियों को भी व्यापक मात्रा पर होने वाला है। सभापति महोदय, भारत सरकार ने कई एक ऐसी परियोजनाएं चालू की है जिसके वजह से जल क्षेत्र से हम मालों का आवाजाही भी कर सकते हैं, उसका ढुलाई भी कर सकते हैं और मंगाने का भी काम कर सकते हैं और छोटे मात्रा में यात्रियों को भी आने जाने का हम सुविधा देने का काम कर सकते हैं। जल मार्ग आज सभापति महोदय सबसे कम खर्चे में माल ढोने की बात हो चाहे यात्रियों के आने जाने की बात हो, वह सुविधा प्रदान करती है। लेकिन अभी हमें और इस पर प्रयास करने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी हमारे देश में इसे जल मार्ग, जल यातायात को और बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने सागरमाला परियोजना, एक महत्वपूर्ण योजना को चालू करने का काम किया है और जिसका एक बड़ा लाभ इस देश को आने वाले दिनों में होने वाला है। सभापति महोदय, मैं आपको और आपके माध्यम से मैं सदन को बताना चाहता हूं, मेरी टाइम में इंडिया शिखर सम्मेलन जो 2021 में आयोजित किया गया था, स्वयं प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअल उसमें सम्मिलित हुए और उसमें लगभग 1,90,000 प्रतिनिधियों ने अपना रजिस्ट्रेशन भी कराया, जिसमें 11 देशों के से लोगों ने उस सम्मेलन में भाग लेने का काम किया और इसका एक बड़ा व्यापक असर रहा। और प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा कि इस सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर उन्होंने कि हम 15 साल के दौरान समुद्री नौवहन क्षेत्र में 82 अरब डॉलर यानी 6 लाख करोड़ रुपए का निवेश हम बंदरगाहों के उत्थान के लिए और विकास के लिए करने का काम करेंगे। और आपने सभापति महोदय, इस सदन में ही वित्त मंत्री जी ने अपने बजट पेश करते हुए बंदरगाहों के उत्थान और विकास के लिए जो अलग एक बड़ा लक्ष्य रखने का काम किया है और इसका लाभ है, मैं आपको बताऊं कि भारत के तटीय सीमा के साथ 18 उनके विकास के साथ 18 प्रकाश स्तंभ भी इस क्षेत्र में लगाने का काम किया जा रहा है, जिसमें खास करके वैसे मछुआरे हमारे जो मछली मारने के लिए दिन में तो निकल जाते हैं, रात में उन्हें वापस आने में लिए कोई ट्रेस नहीं मिलता है और ये बड़े ऊंचे स्तंभ यह बनाए जा रहे हैं, प्रकाश स्तंभ, जिसका उन मछुआरों को आने जाने में भी व्यापक स्तर पर लाभ मिलेगा। और इसके लिए विभाग और सरकार ने एक बृहद योजना, विस्तृत योजना बनाई है और 15 से लेकर के भारतमाला परियोजना चालू किया, उससे लेकर के और
आगे तक के दशकों तक की योजना बनाई है और जिसका लाभ आज पूरे देश में दिख रहा है। आज सभापति महोदय, मैं यह बताऊं कि चाहे इसमें आत्मनिर्भर भारत की बात हो, आत्मनिर्भरता भी व्यापक के इसमें जल परिवहन के माध्यम से हो रहा है। हमें अलग से काम करने का, छोटे या बड़े, जो बगल में उससे बड़े जहाज हमारे आते हैं उसके आसपास के लोगों को इसका व्यापक स्तर पर लाभ मिलता है। महोदय, आजादी का अमृत महोत्सव आज ये पूरा देश अभी मना रहा है और इस अवसर पर भी इस जल परिवहन मंत्रालय ने एक बड़ी अपनी योजना रखी है और इसमें जो बंदरगाह है उनके बुनियादी ढांचों को बढ़ाने के लिए और उस अवसर पर वहां के स्थानीय स्तर के लोगों के विकास करने के लिए योजनाएं, कई एक योजनाएं भारत सरकार और यह मंत्रालय बना रही है और उसका लाभ आने वाले दिनों में मिलेगा। यह सागरमाला परियोजना के द्वारा हम बंदरगाहों को आधुनिकीकरण भी करने का काम कर रहे हैं। सभापति महोदय, यह पहले संभव नहीं था, पहले नहीं हो रहा था, लेकिन आज यह पूरा का पूरा यह संभव हो रहा है और इसका लाभ हम इस माध्यम से भी ले रहे हैं। हमें जल परिवहन के माध्यम से हमें लागत भी कम होता है, पॉल्यूशन भी कम होता है और हमें ढुलाई भी ज्यादा से ज्यादा करने का हम काम कर सकते हैं, करने का काम हम करते हैं। मतलब मैं आपको बताऊं कि अभी इधर नए कितने बंदरगाहों का अभी शुभारंभ भी हुआ है। मैं पटना में भी एक बंदरगाह अभी जो पटना से लेकर के गुवाहाटी तक 200 मीट्रिक टन खाद्यान्न चावल लेकर के गया है। वह 25 दिनों में यात्रा पूरी करेगी और उसमें लागत जोड़ा गया तो जिसने रेल से, रोड मार्ग से जो लागत होता उससे बहुत कम लागत में वह सामान वहां पहुंचेगा, सही तरीका से पहुंचेगा और पोल्यूशन भी उसका कम होगा। स्वयं विभागीय मंत्री वहां जाकर के इससे पूरे परियोजना का उद्घाटन करने का काम उन्होंने किया है। महोदय, मैं आपको बताऊं कि इतना ही नहीं, आगे मैंने अभी आपको शिपिंग स्तर पर शिपिंग टैक्सी भी चलाने का काम अभी बंबई में अभी माननीय हमारे मंत्री ने जाकर के वहां शुरू किया है और उसका लाभ भी वहां के लोगों को, जिसका एक बड़े दिनों से जिसके इंतजार था, उस इंतजार को पूरा करने का काम इस सरकार ने करने का काम किया है। हम बंदरगाहों को जिस तरीका से हम विकसित भी कर रहे हैं उस तरीका से लोगों के सुविधा को भी देने का हम काम कर रहे हैं। महोदय, पटना में कालू घाट एक अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह जिसका शिलान्यास माननीय मंत्री जी ने पिछले महीनों में किया है, वो आगे आने वाले दिनों में वह करेगा। वह पूर्वी भारत को, मैं कहूं कि वहां से बिहार से लेकर के पूरब के सारे राज्यों को वह बंगाल होकर करके गुवाहाटी तक जाएगा, जो समुद्र तट से जुड़े हुए राज्य है। वहां से माल ढुलाई के साथ साथ वह बांग्लादेश तक के भी वहां के पूरे जो उनके आवश्यकता है उनको पूरा करने का काम, उनको चाहे ढुलाई की बात हो और चाहे उनके यातायात, छोटे यातायात है, उनको पूरा करने का काम यह कालू घाट जो अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह बन रहा है वहां से लेकर के और जो गुवाहाटी तक जाएगी वह पूरा करने का वह काम करेगी। यह बंदरगाह 900 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी और इसमें मैं बताऊं कि इसके माध्यम से हम अलग से भी लोगों को उसका लाभ देने का हम काम कर सकते हैं। महोदय, मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन में स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इसमें हम ज्यादा से ज्यादा दिलचस्पी लेकर के और देश के लोगों को इस जल मार्ग से जो आज तक विकसित नहीं हुआ था उसको विकास करने के दिशा में हम हर पहलू पर काम करने का काम करेंगे और इसका लाभ हमें लगता है कि देश में पर्यावरण को भी कंट्रोल करने में सभापति महोदय मिलेगा, यात्रा को भी पूरा करने में मिलेगा और इसके साथ यह हमें पूरा का पूरा माल भी सुरक्षित तरीके से, सुगम तरीके से वहां पहुंचने का भी काम होगा। हमने प्रधानमंत्री जी ने इस माध्यम से वह तटीय क्षेत्रों में, जहां तटीय क्षेत्र के लोग हैं, उनके कॉरिडोर में भी वह, आपको मैं बताऊं, कॉरिडोर के भी किसानों को अलग से खेती करने के लिए, उनके लिए अलग से प्रोत्साहन करने का काम किया है और छोटे छोटे भी किसान उससे लाभान्वित होंगे और उनके माल भी
वह छोटे स्तर पर भी उनके माल एक जगह से दूसरे जगह तक जाने का वह काम करेगा। यह आपको मैं यह सदन को मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से। सभापति महोदय, मैं एक आध बातें मैं अपने क्षेत्र के लिए, जिसे माननीय विभाग के मंत्री जी ने जिसकी मंजूरी देने का काम किया है, उसको मैं आपके सामने मैं सिर्फ रखना चाहता हूं। राष्ट्रीय जल राजमार्ग 40 के विकास करने के लिए वह सैद्धांतिक रूप से विकास विभाग ने स्वीकृत कर लिया है। जो आपके घाघरा नदी से जो बलिया और सारण को जोड़ती है, वह मांझी से वह शुरू होकर करके अयोध्या तक वह जल मार्ग से यात्रा और छोटे कार्गो टर्मिनल की स्थापना के लिए विभाग ने स्वीकृति दी है। और उसका हमें लगता है कि मैं माननीय मंत्री से मैं आग्रह करूंगा कि आप उसको जल्द से जल्द पूरा करने का आप काम करें, जिससे कि वहां के लोगों को इसका लाभ मिल सके। क्योंकि इसके लिए आपने स्वीकृति भी दी है, उसके राज्य मार्गों के जो चिन्हित किया है उसको भी करने का काम किया है। और इसका लाभ है पूरे बिहार के और बलिया उत्तर प्रदेश के भी लगभग 335 किलोमीटर की यात्रा होगी। यह यात्रा पूरे हम करेंगे और इसका लाभ हमें मिलेगा। हमारे माननीय सांसद बलिया, हमारे बड़े भाई वीरेंद्र सिंह मस्त जी बैठे हुए, हमें उनको अंदर में इसके प्रति यह भावना सद्भावना होगी कि आप निश्चित रूप से आप मार्ग जब शुरू करेंगे तो बलिया से लेकर माने बिहार से लेकर के और उत्तर प्रदेश के लोग भी सही मायने में अयोध्या तक की भी यात्रा सुगमता से एक धर्म स्थल को भी जोड़ता है। मांझी राम घाट से वह शुरू होगा और अयोध्या आकर के वह टर्मिनल पूरा होगा। और मैं उसमें यह भी आग्रह करूंगा कि छोटे उसमें आप कार्गो का भी काम पूरा करने का काम करेंगे, यह मैं आपसे आग्रह करता हूं। महोदय, जहां हम लोग गंगा को मां कहते हैं, हमारे क्षेत्र में समुद्र नहीं है, लेकिन गंगा सरजू घाघरा है, जहां से हम जलमार्ग के माध्यम से यह परियोजनाएं शुरू कर रहे हैं और इसका लाभ भी आगे लोगों को देने का हम काम करें। और जहां गंगा को हम मां कहते हैं, वहीं अगर आप आगे चले जाए पूर्व में तो ब्रह्मपुत्र को पिता हम कहते हैं। और इस तरीका से हमें उसका एक अपने स्तर से एक धार्मिक भी महत्व है, उस धार्मिक महत्व को भी हम पूरा करने का काम करेंगे। और जिस तरीका से सागरमाला परियोजना के माध्यम से यह सरकार पूरे जलमार्ग को भी विकसित करने का काम कर रही है, मैं पूर्ण रूप से हृदय से इस उनके डिमांड्स फॉर ग्रांट्स में जो इन्होंने राशि के मांग किया है उसका मैं हृदय समर्थन करता हूं। और मैं विश्वास करता हूं कि सरकार मंत्रालय जो मैंने कहा है कि राष्ट्रीय जल मार्ग 40 को तुरंत से तुरंत पूरा करे, ऐसे आशा और विश्वास के साथ मैं पुनः प्रधानमंत्री जी को हृदय से बधाई करता हूं। विभागीय मंत्री राज्य मंत्री को बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for giving me an opportunity for the Ministry of Ports, Shipping, Waterways and Fisheries. It is a nodal ministry to administer shipbuilding, ship repair, major ports, national waterways, inland waterways. Sir, I would like to share some tourism passenger jetty project pending in the central government under Sagarmala Project. Radio Club, that is Apollo Port, the Gateway of India, is an important tourist destination in Mumbai, where the existing 5 jetties are used for Elephanta, Mandwa, JNPT, harbor cruising and carries around 30 lakhs passengers annually. The existing jetty facilities at the gateway is inadequate for the passengers and cause a lot of problem to the passengers, especially the elderly, women and children. For the convenience of the passenger, construction of the new passenger jetty related to the facility at Radio Club near Gateway of India is proposed under Sagarmala scheme, for which 163 crores is required. The central government in the funds of this current year. The Janjira, the historical port, which is partly submerged in the sea, is in my Raigad district, is an important tourist destination and is visited by 7 to 8 lakhs tourists every year from the Rajpuri, Dighi, Murud, Khora, Bandar. There is no jetty equipped for the boat landing at the Janjira port. Therefore, tourists need a jetty to get off the boat safely at Janjira port. For this, 111 crores
it is being submitted, the project is being submitted to the central government for the available of the funds in year 2022. Padma Fort in the Raigad district is an important tourist destination and visited by 20,000 tourists every year. There is no boat equipped jetty at Padma Fort, so passengers, tourists should be provided a well-equipped jetty for safe entry and exit from the boat at the time of entry to the Padma Fort. Accordingly, 20 crores budget estimate is submitted to the central government by date 6/10/2021 for the consideration and the approval. I request Honorable Minister to kindly direct concerned official to release the grant at earliest. Suvarnadhurka Fort is an historical site in Dapoli, in my parliamentary constituency in Ratnagiri district. This fort was built during the Silhar dynasty, was captured by Chhatrapati Shivaji Maharaj in 1660 by defeating Ali Adil Shah. Shivaji Maharaj later rebuilt and strengthened the fort. Due to the vibrant history, Suvarnadhurka Fort attracts a lot of tourists. It takes about 20 minutes to reach Suvarnadhurka Fort by a boat from the Harne port. For the safe movement of the tourists, budget of rupees 18 crores is already been forwarded to the central government. Mandwa to Alibag, passenger travel from Mumbai to Alibag in my Raigad district, various other the place, and make use of their private vehicles through the Ro-Ro service from Bhaucha Dhaka, that is Mumbai to Mandwa. This has led to the increased traffic congestion in existing 2-lane road from Mandwa to Alibag. It needs to be made 4-lane for there should not be no traffic jam. Vijayadurga Fort, which falls in the Sindhudurga district, needs to be upgraded. The existing road from Vijayadurga Fort to Mumbai Goa highways is a need of the hour. Fishing and harbors, fish landing centers under the Sagarmala, a part of the coastal community development under the Sagarmala. The Ministry of the Shipping will provide central finance assistance to the government of the Maharashtra for the development of the modernization of the 9 fishing harbors, 16 fishing landing centers in the Maharashtra. As a project, our approval for the are proposed to take program in 2 phases. Out of these 9 harbors, I would like to kindly consider Harne, that falls in Ratnagiri, Jamuna, that falls in Sivadan, Agardanda, that falls in also Alibag. Both are in the Raigad district. The total cost is about 560 crores. I would like to suggest to set up marine food park, seafood restaurant, art gallery in the premises of the proposed Sasundak area, providing gas for the infrastructure facility for the Bodni, especially in the Alibag Taluka in my Raigad district under Bhu Liberation Scheme. Government of Maharashtra later dated 7/1/2020, another letter, reminder letter 3 February 2020, and even 24 July 2020. I would like to draw attention towards the long pending demands of the providing grants for the infrastructure facility at Bodni, Taluka Alibag district, Raigad under the Blue Liberation Scheme. Sir, revolution for the funds for the Mirkarwada in Ratnagiri in under the Blue Liberation near Karanja jetty, near the Karanja fishing harbor, and upgradation the issues related to the height requirement of the additional channel, degrading, remodeling of PCC soling of quarter part as well as increased breakwater wall for the operational dry port. This has been also submitted for the safety and the easy movement of the fishing boat. Size and the channel needs to be increased by the 20 meters, that it should be 70 meters in the length, which will ease to fishing boat operation 24/7. Even in zero tide fishing, boats can be approached Karanja fishing harbor due to widening to the channel. Karanja fishing harbor will become one of the landmark fishing harbor in the India. For above said points consider, it is giving to be the most modern fishing harbor considering the facilities and the transportation connectivity is considered. Karanja fishing harbor is only fishing harbor providing 20 acres of the land for the multi-purpose Yes. use, which is developed massive infrastructure in future, pouring more jobs and the fishing-based activities and opportunity in the local area. Sir, the last but one, considering aquaculture as a part of agriculture, I would like to apprise the August House
the government of Maharashtra through multiple communications and the central government Ministry of the Fisheries Animal Husbandry have raised subject considering aquaculture as per the agriculture to promote aquaculture in the country to make aquaculture activity more profitable, sustainable. However, nothing has been reported by the central government so far. So I would like to emphasize through you to the government of India, whatever the proposal given by the government of the Maharashtra for the under the Sagarmala project, Yes. innovation, Yes. and for the fishing, if Thank you. that should be sanctioned at earliest. Thank you very much, sir, for giving me an opportunity. Jai Hind, Jai Maharashtra. Thank you, honorable member. Thank you, Speaker, sir. I stand here on behalf of the CPIM on the demands for grants for Ministry of Ports and Shipping and Waterways. Sir, the ministry has an important role in handling the cargo traffic in and out of the country. But unfortunately, this government has not succeeded in implementing the vision of making India a preferred investment destination. Sir, it has been 7 years now after launching the Sagarmala project in 2015. And even now, nothing sustainable has been changed in India's ports. Sir, this government has claimed that 574 projects would be implemented at a cost of rupees 6.01 lakh crore as part of Sagarmala project. Sir, for this, the government is patterning with the corporate giants like Adani ports, and already major ports have been transferred to them. And result is that public institutions like Cochin Port are struggling for their existence. So Cochin Port has been badly affected by the skewed vision of the government to hand over the management of International Container Transshipment Terminal at Vallarpadam to the DP World on BOT basis. So not only that, this government unable to transform ICTT in Vallarpadam as a transshipment hub, but the finances for the functioning of Cochin Port also not made available as per the license agreement. So I request that the agreement with the DP World is terminated at the earliest so as to save both ICTT and the Cochin Port. Sir, another issue I want to bring to the notice of this House is that the acute shortage of containers for exports. Everyday news reports are coming out on how our ports are choking the supply of containers by poor planning. Sir, a lot of shipping companies are avoiding the Indian ports as they are facing inordinate delay in getting the containers delayed to mismanagement of our ports by this government. Sir, and what is the result? Sir, the shipping companies have hiked their charges by whooping 400 to 500%, and goods and products are piling up in our ports due to the mishandling of the situation by the ministry. So all this because of the poor planning on the part of this government while implementing a project like Sagarmala, your flagship program. Sir, already there is a shortage of containers in the world market, but this government has done nothing to help our exporters, especially of perishable goods. So today we saw the Honorable Prime Minister boasting the India's exporting crossing 40,000 crore US dollars, mainly due to the increase in the exports of petroleum products, engineering, jewelry, and chemicals. Sir, why this government is silent about the sectors like seafood exports and coir exports, which are facing an unprecedented crisis due to the COVID-19? Has this government taken any measures to help the perishable food exporters at the time of container shortage? I want to remind the government that they are answerable for the ordinary people of the country also, who are the dependent of these sectors. Sir, coming to the waterways, which has the potential to develop as an eco-friendly and cost-effective alternative for cargo transportation with the country, is being ignored by this government. Sir, our LDF government in Kerala had requested way back in 2018 to extend the National Waterway 3 to the south of Kollam up to Kovalam and to the south of Kozhikode up to Bekal, so that entire stretch of
620 kilometers from south to north could be covered by it. But even now, this government has not approved by the request, and the state government is developing these routes from their own funds. Sir, proposal worth almost 1,300 crores is under consideration for funding from Kerala Infrastructure Investment Fund Board, and soon it would become a reality. Instead of helping the Kerala government by approving the extension of national waterway, what this government is doing to destroy the Bepur port by shifting of officials to Mangalore port. So this government has the hidden agenda of snatching the traditional link between Bepur and Lakshadweep. And that's why even the existing facilities in Bepur are curtailed. Sir, is this way to develop the ports and waterways in the country? Why this government showing political vendetta in matters of development? I request the Honorable Minister to show narrow political compulsion and forward to help the state government and develop the ports and waterways in Kerala. By these words, I conclude my speech. Thank you, sir. Thank you. Honorable Member Sri Ravindranath Kumarji. So thank you for allowing me to speak on the demand for grants for the Minister of Ports, Shipping and Waterways 22-23. So first, let me appreciate our Honorable Minister of Ports, Shipping and Waterways, Sri Sarbananda Sonawalji, for fast-pacing the initiative to implementing the Green Port policy. This juncture, I wish to appreciate the initiatives of our government aimed at reducing the logistic cost in India to 10% of GDP within the next 3 years. Sir, our Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi ji, envisaged the Maritime India Vision 2030, a 10-year blueprint with the aim of overhauling the Indian maritime sector, an amount of 3 lakh crore investment in port projects that in turn promises to generate employment for 20 lakh persons have been envisaged to further boost performance and productivity of our maritime sector. Sir, at this time, I also wish to place a few recommendations concerning certain specific projects and initiatives with regard to the ministry. Sir, manning of ships with trained, capable, and certified seafarers is a rising challenge. We have only one approved pre-sea maritime training institute and one post-sea maritime training institute. The allocation of ₹1 crore for research and development is grossly inadequate, which I recommend to be enhanced. So I am the member of the Court of Indian Maritime University. Honorable Minister, Sri Sarbanji was kind enough to personally inaugurate the Merit workshop in Chennai in last year December. Sir, this key institution importing maritime training and R&D is faced with severe shortage of funds. Students lack hostel facilities. There is a shortage of industrial experts in training, and students' placement opportunities also need further boost. Sir, the institution is managing its annual shortage of nearly 20 crore from the available balance, which will be exhausted in another year. A special request for grants under Standing Financial Committee 3-2 amounting to 495.27 crore is now pending clearance from concerned authority. I wish to request through you, sir, to the minister to kindly expedite the release of this SFC fund and also to ensure that IMU receives continuous endowment of fund. So a state of the art cruise terminal was inaugurated in Chennai port in 2017. However, the terminal remains underutilized. Sir, I request the Office of Minister to extend focused intervention into the proper utilization of the cruise terminal, especially with the Maritime Vision 2030, aspiring to transform India as a global hub for cruise liner. Sir, as per the data 2022, we have only 468 Indian flagships handling a gross tonnage of 1,15,810. Indian and foreign owners increasingly
opt to own vessels outside India, they pay virtually zero tax. Same time as access India's booming international cargo trade through non-Indian ships, the situation has to be changed, sir. Sir, our coastlines and waterways in our country are grossly underutilized. Tamil Nadu has the second largest coastline in India, extending at the length of 1,076 kilometers, in line with the ministry's port-led development program, Sagarmala. I wish to request Honorable Minister to kindly allocate dedicated programs and funds for Tamil Nadu, creating better infrastructure and promoting coastal shipping for saving logistic cost. Similarly, sir, despite having an extensive network of inland waterways in the form of river, canals, backwater, and creeks, freight transportation by waterways is highly underutilized. Waterways currently contribute to only around 6% to the Indian transportation model mix, which is significantly low. A major stretch of 1,094 kilometer long National Waterway 4 between Kakinada to Puducherry passes through Tamil Nadu. I am happy that the key section of this waterway, which is known as the Buckingham Canal, starting from Chennai, is being restored as part of the revival project. It is my humble submission this inland navigation route of NW4, only 2 points, may be revived into an efficient mode of freight and passenger transport at the earliest. Sir, I am given to understand that the Directorate General Shipping of India is contemplating a proposal to restrict the age of ships to the maximum of 20 years for being eligible to be registered under Indian flag. Though the move by DG Shipping is laudable, I wish to request that such a move may be brought in only once our Indian fleet has grown to a sizable extent. Sir, steps may also be taken to constitute a maritime development fund to finance India's maritime sector at internationally competitive rates and also execute a time-bound plan of affirmation action. Sir, only 1 point, I finish it, sir. Sir, historically, Tamil Nadu was a land of seafarers. I am proud that for the fact that Tamil Nadu can boast of yet another significant name in the maritime history of India. Sir, the famous freedom fighter, V.O. Siddhambarana Pillai, popularly known as Kapalotiya Tamilan, literally means that Tamilan who draws the ship, is the first to start Indian shipping service way back in 1906 under the name Swadesi Shipping Company from Thoothukudi. Considering his contribution to India's maritime revolution and the challenges to honor his service, I wish to recommend that the statue of V.O. Siddhambaram Pillai may be installed in the new Parliament building. Thank you very much. Thank you all members. Srimati Rita Beguna Joshi. माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके आभारी हूं कि आपने मुझे वर्ष 2022-23 के लिए पतन, पोत, परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान मांगों पर बोलने का अवसर दिया है। अध्यक्ष जी, हमारे देश का समुद्री व्यापार बहुत प्रसिद्ध है, हमारा बहुत बड़ी हमारी विरासत है। 5000 साल पुराना हमारा इतिहास है और चाहे हड़प्पा काल से लेकर और हम आधुनिक काल तक आए तो लगातार हमारा अनेकों महाद्वीपों के साथ व्यापार होता रहा। यहाँ तक कि हमने इस जो समुद्री सिल्क रूट है, मार्ग है, उसके माध्यम से भी हम लोगों ने दक्षिण एशियाई क्षेत्रों के साथ व्यापार किया है। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे यूरोपीय देश और व्यापारी आते रहे, समुद्री व्यापार करते रहे, हमारा जो अपना व्यक्तिगत राष्ट्रीय जो एक हमारे जो इनिशिएटिव था वो लगभग समाप्त होता चला गया। और चाहे वो डच रहे हो, पोर्चुगीज रहे हो, ब्रिटिश रहे हो, इन लोगों ने कहीं ना कहीं अपने उस जलिए उन्होंने अपने जहाजों को लाए और हमारे जो इनिशिएटिव थे उनको कम कर दिया। ये तो सत्य है कि पूरे विश्व का 80% व्यापार जलीय मार्ग से होता है और भारत का भी 95% जो निर्यात है वह जलीय मार्गों से ही होता है। लेकिन
और समुद्री क्षेत्र के महत्व को हम कम भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि समुद्री क्षेत्र हमारी सुरक्षा के लिए, स्थिरता के लिए, आर्थिक स्वास्थ्य के लिए, सतत विकास के लिए और सबसे महत्वपूर्ण हमारी ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि 50% गैस और 80% तेल का आवागमन हमारे समुद्री मार्गों से ही, जलीय मार्गों से ही होता है। स्वतंत्रता के बाद सबसे ज्यादा जो जोर पड़ा वो एक तीव्र यातायात के ऊपर, और उसमें रेल और हवाई जहाज इनके ऊपर ज्यादा ध्यान लोगों का गया। समुद्री मार्गों पर या हमारे शिपिंग इंडस्ट्री को, शिपिंग की ओर ज्यादा ध्यान नहीं था। जबकि बड़ा दिलचस्प है, और ये भी दिलचस्प है कि इतने वर्ष हो जाने के बाद भी 75 साल से को हम पहुंच रहे हैं, लेकिन जो रेलवे का जीडीपी में शेयर है वो 9% है, एविएशन का 6% है, लेकिन हमारे बंदरगाहों का केवल 1% है। इसके मतलब सरकारों ने, पूर्व सरकारों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। और भले ही इस एक शिपिंग मंत्रालय की स्थापना काफी पहले हो गई थी, 2009 में की गई, लेकिन इस पे काम नहीं हुआ। 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो उन्होंने एक चिंतन में पैराडाइम शिफ्ट किया, और इसमें उन्होंने निश्चित किया कि समग्र विकास तब तक संभव नहीं है जब तक सारे सेक्टर्स बराबर से आगे ना बढ़ें। और इसीलिए उन्होंने पहले आत्मनिर्भर भारत की बात कही, फिर उन्होंने मेक इन इंडिया की बात करी, और अब गति शक्ति को आगे बढ़ाया है। ये जो परिकल्पना है गति शक्ति की, इसके अंतर्गत 7 इंजन्स को या 7 माध्यमों को चिन्हित किया गया है विकास के लिए। इसमें सड़क है, रेल है, इसमें ये ट्रांसपोर्ट पतन है, सामान्य ट्रांसपोर्ट, सार्वजनिक परिवहन है, जल मार्ग है और लॉजिस्टिक स्थापना है। उन्होंने का ये विचार है प्रधानमंत्री जी का कि जिस तरह से जैम ने जनाधार, ये जनधन योजना, आधार और मोबाइल ने, जैम ने जिस तरह से क्रांति करी और सामान्य क्षेत्र में, सोशल सेक्टर में, सामाजिक क्षेत्र में करोड़ों भारतवासियों को जो जन कल्याणकारी योजना थी उनको प्राप्त करने का अवसर दिया, उसी तरह से जन गति शक्ति भी भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना स्ट्रॉन्ग कर देगा, इतना मजबूत कर देगा कि विश्व स्तरीय हमारे पास यातायात के साधन होंगे, जिससे व्यापार बढ़ेगा और देश की शक्ति बढ़ेगी। यहाँ इसीलिए उन्होंने मल्टी मोडल कनेक्टिविटी की बात की, और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि एक इतना बड़ा डैशबोर्ड बनाया गया है इसके लिए, जैसा विश्व में कहीं नहीं है। बहुत बड़ा डैशबोर्ड बना है, विश्व का सबसे बड़ा। मेरी जो सरकार है, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उनका बहुत स्पष्ट विचार है। उनका विचार है कि मशीनीकरण, डिजिटाइजेशन और कानूनों में बदलाव के माध्यम से प्रक्रियाओं का सरलीकरण होना चाहिए, और इसीलिए, और जब ये होगा तभी इन्वेस्टमेंट आएगा, और जब ये होगा तभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी होगा। और इसी के सागरमाला परियोजना, नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य अपनी योजना का उन्होंने संचालन किया, उसको स्थापित किया है। फ्लैगशिप प्रोग्राम के अंतर्गत इसके जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है सागरमाला के, वो पूरी तरह से पोर्टलेट डेवलपमेंट की बात करता है, पोत आधारित विकास की बात करता है, और हमारी जो नेविगेबल वाटरवेज हैं, जहाज चलने वाले जो योग्य मार्ग हैं, जो पानी है, जल है, वो 14,500 किलोमीटर है, 14,500 नेविगेबल वाटरवेज। अटल जी ने 2003 में प्रारंभ किया था, शुरुआत की थी कि यहाँ पर क्रांति, कुछ परिवर्तन होना चाहिए, आधुनिकीकरण होना चाहिए। और अब जाकर 2015 में जब सागरमाला आई तो उनके परिकल्पना को यथार्थ रूप देने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का विजन क्या है? वो चाहते हैं भारत में विश्व स्तरीय पोर्ट्स हो, पोत हो, जहाज का निर्माण यही हो, हम हब बने मरम्मत के, रिपेयरिंग के भी और जहाज निर्माण के भी, व्यापार में बढ़ोतरी हो, और तटीय क्षेत्रों में
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विकास भी हो, क्योंकि हम समाज को छोड़कर आगे नहीं चल सकते। तो इसलिए जो लोग तटीय जीवन बिताते हैं उनके लिए भी रोजगार और विकास की संभावनाएं मजबूत होनी चाहिए। इन्होंने अनेक कानूनों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से करते हैं शुरू। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत जैसे हर क्षेत्र में सरलीकरण किया जा रहा है, वैसे यहाँ भी हुआ। यहाँ पे जो अब हमारी सरकार ने पिछले 7-8 सालों में करीब 1500 से ज्यादा जो ऑब्सोलीट हमारे कानून हैं, जो अनुपयोगी कानून है, उनको समाप्त किया। 25,000 से ज्यादा नियमों को बदला और इसी के अंतर्गत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए उन्होंने अनेकों एक्ट्स को दिया है। अभी तो 5 ही मिनट हुआ होगा, प्लीज। 1963 में पोर्ट्स ट्रस्ट को हटाकर मेजर पोर्ट अथॉरिटी एक्ट को लाया गया। प्रबंधन, नियंत्रण, व्यापार निर्णय, कॉम्पिटिटिव बिजनेस को आगे बढ़ाया गया। मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट 2021 व्यापारिक विवादों को समाप्त करने के लिए, त्वरित समाप्त करने के लिए आर्बिट्रेशन का राइट और मुआवजा, शुल्क राहत, लाइसेंस शुल्क में कटौती करने का अधिकार भी पोर्ट अथॉरिटीज को दिया गया। शिप रिसाइकलिंग एक्ट 2019, आज शिप रिसाइकलिंग में भारत इंटरनेशनल हब बन चुका है और शिप बिल्डिंग में भी उन्होंने ये जहाजों के निर्माण में भी यह नियम बन गया है कि राइट टू रिकॉल इंडियन शिपयार्ड को होगा। जब वो मना करेंगे तभी आप कहीं और इसको दे सकते हैं। तो इस प्रकार सिंगल विंडो के माध्यम से, डिजिटाइजेशन के माध्यम से, ई कॉमर्स के माध्यम से, ई पेमेंट, ई इनवॉइसिंग, कागज विहीन व्यवस्था स्थापित करने के और हमारी शिपिंग मिनिस्ट्री बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। इन सब का असर ये है कि आज स्मार्ट टाउन्स बन रहे हैं और पोर्ट्स बन रहे हैं और साथ ही साथ खर्चे भी कम हो रहे हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण काम जो हमारी सरकार कर रही है वो 1,19,000 करोड़ की लागत से ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स और सीईसीज यानी कोस्टल इकोनॉमिक जोन को भी स्थापित कर रही है और फोकस है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल के बंदरगाहों पर। यहाँ पर कोशिश है कि जो प्रोडक्शन ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन है, औद्योगिकरण, वो पोर्ट्स के आसपास, पोतों के आसपास हो ताकि लोगों को रोजगार मिल सके और इसलिए इससे बहुत फायदा हुआ है, रोजगार बढ़ा है। लास्ट माइल कनेक्टिविटी में भी सरकार बहुत काम कर रही है। 1,36,000 करोड़ बंदरगाहों के इसको सड़कों से जोड़ने का काम हो रहा है। आज 5 लाख करोड़ की लागत से 802 प्रोजेक्ट्स 2035 तक समुद्री व्यापार को नई ऊंचाई प्रदान करेंगे जो चल रहा है। कंटेनर सर्विसेज परियोजना अगर लागू हो गई तो 35,000 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष बचेगा। बस आपका 2 मिनट और लूंगी, मेरा समाप्त है। जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट यानी नेशनल वाटरवेज, ये बहुत बड़ी बात है और मैंने जो आज इस मिनिस्ट्री पे बोलने के लिए स्वतः मांग की थी वो इसलिए भी क्योंकि हम लोग जो समुद्रों से दूर रहते हैं उनको अंदाज नहीं है कि हम क्या खो रहे हैं और इसका पोटेंशियल कितना और हमको कितना आगे बढ़ाना चाहिए। ब्लू रेवोल्यूशन कैसे होगा जब तक यहाँ पर ये काम नहीं होंगे, लेकिन मुझे इसलिए हुआ क्योंकि जो आपका NW1 है वो गंगा पर है और प्रयागराज, इलाहाबाद से लेकर और वो हल्दिया तक जाता है और उसमें जिस तरह से काम हो रहा है तेजी से, बहुत ही मैं सोचती हूँ कि प्रभावशाली है। 1390 किलोमीटर का काम हो रहा है। वर्ल्ड बैंक के सहयोग से 4,663 करोड़ रुपए उस पर लग रहे हैं। 3 मल्टी मॉडल टर्मिनल्स बन गए हैं और नेविगेशन प्रोजेक्शन है 1500 से 2000 DWT बार्जेस उस पर चलाने के। आज अगर देखें तो करीब 9.21 MMT 2020 में था, और अब 2022 में वो बढ़कर 9.27 हो गया है। इसमें भी बहुत ज्यादा वृद्धि हो रही है। मैं बस परिणामों पे आ रही हूँ। इन सब चीजों के जो परिणाम रिजल्ट्स हैं उसमें एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस, कैपेसिटी दोनों बढ़ा है। असर है कि टर्नओवर टाइम जहां 2012 में माल के ढुलाई का आने जाने का 107.29 घंटे थे,
वही 2022 में 55.27 घंटे हो गया है। मेजर पोर्ट्स में बंदरगाहों में 11,000 MTPA 2017 में था की कैपेसिटी। Kindly conclude. Kindly conclude. Just one more 2 points, that's it. You have taken more time. No, just 1 minute. और आज 2021 में वो 16,000 MTPA हो चुका है। रिसाइकलिंग में, ग्रीन शिप रिसाइकलिंग में, मरम्मत में, शिप बिल्डिंग में हम जल्द तेजी से हब की ओर बढ़ने के इंटरनेशनल हब बन रहे हैं। नॉन मेजर पोर्ट्स में भी हमारी कैपेसिटी बढ़ गई है। बस अंत में मैं कहूंगी कि शिपिंग टनेज 1947 में 0.9 मेट्रिक GT था। 2000 just last point please, give me 30 seconds, 30 seconds Please, ma'am. 30 seconds। 1947 में 0.9 मिलियन GT था। 2016 में 11 मिलियन GT हुआ। 220 में 13.1 मिलियन GT हुआ। मैं इतना ही कहूंगी कि आज वर्ल्ड रैंकिंग में हम 146 पे थे 2018 में, 2020 में 68 पे हैं। 2035 तक अलग अलग चरणों में लेकर हम विश्व के 10 सबसे महत्वपूर्ण पोर्ट्स में, बंदरगाहों में हमारे भी देश के बंदरगाह आएंगे। धन्यवाद। Thank you. Dr. Jay Kumar ji. Honorable Speaker, sir, thank you very much for the opportunity. Sir, right from morning, I'm observing the deliberations in this house. Member from Kerala has raised a great apprehension about the government policy in promoting the ports and shipping industry in the country. I'm also of this, even some other members are also echoed similar views. I'm also of the same opinion that the government policy in promoting harbors and ports is mainly to destroy and make defunct of the government established ports. For example, sir, in Tamil Nadu, this a company is coming up, Mrs. Adani and Co. They are establishing a monstrous port in Tamil Nadu, spreading over an area of about 6,000 acres, sir. And the 6,000 acres land is going to be taken by filling the sea with river sand, transporting it over a distance of 60 to 70 meters, destroying the entire 60 meters, 660 meters and 60 meters and 80 meters distance. And apart from that, 3,200 Poromboku land in a land-starved area. This port is coming nearer to Chennai megacity, and about 3,200 acres of land taking over there is going to make a mess, and the North Madras will get destroyed and decimated if this port comes over there, sir. Not only that, the entire Poromboku land and watershed and a sanctuary in the nearby area, etc., is coming up, and the sand for this 53 million cubic meters of sand to be transported, sir, and rocks of about 50 million tons to be transported through the city, sir. And then there will be a vehicle traffic, now about 40,000 vehicles traffic in that area. It takes 3 hours to pass through 3 kilometers or 4 kilometers distance, sir. Once this port comes over there, the traffic capacity would be about 54,000, sir. Another thing, sir, the capacity of this particular port would be about 320 million tons per annum, sir. Whereas all the ports put together in Tamil Nadu, all the ports put together is only 80% of this capacity, sir. When such large number of ports are already there and they are operating at 30 to 40% capacity, where is the need for this government to encourage a port to go over there and to destroy the existing government ports? The, what is that, Madras Port Trust, Vavusi Port in Thoothukudi, and all stretch of about 8 to 9 ports will go out of business once this port is getting established, sir. Sir, even otherwise, the problem here is this particular company is coming up with a huge and large scale violations. What are those violations, sir? Ports are categorized as red industries. They are not supposed to be there in an area where people are living or where
the sanctuaries are there. But in this particular case, sir, in 2006, Ministry of Earth Sciences said the erosion of the sea 50 meters and above, there a port cannot come. It should not be allowed. Our Ministry of Environment and Forest and Climate Change should build a ban on this. And the company in its own technical feasibility report that is called Environment Impact Assessment, that itself has mentioned 5.6 meters is the erosion. What is the upper limit to allow an industry is 1 feet erosion is there. No industry should be allowed in that area. But this industry, this port, this company, the Adani group of company is allowed to go ahead in this area, sir. Apart from that, no industry can come within 10 kilometers of a bird sanctuary or any other natural habitat is there, sir. In this case, the bird sanctuary is there between Andhra and Tamil Nadu at a distance of 2.1 kilometers from Tamil Nadu, which is violating. Within 10 kilometers, industry should not come, but there is a work is happening over there, sir. Sir, I am the MP of that constituency. I am representing that constituency. That is the reason. Another thing, sir, encroachment of watersheds, and it is going to affect that area in a very, very bad manner. Secondly, sir, the very hazardous substances are going to be imported, and it will be detrimental to the people. Any action takes place, take it from me, sir. About 10 kilometer distance will be wiped away like it had happened in Bhopal earlier. Therefore, these are all the very, and apart from that, the audacity of the company, the atrocity is that they are asking to declare, sir, Madras city port area, Adani company has written to the government to declare that area as a no fishing area where 45,000 people are living over there and their families are. Is it not an atrocity and audacity of this company throwing away the habitat people over there, and they are coming and sitting? Therefore, sir, I strongly object this. I beg this government, please take my request as a member of that parliament. I appeal to you. This is not an industry to be done. Take it to Gujarat. I am not against anyone this government helping. Take it to Gujarat. Take it to many other coastal areas. There it can be promoted, sir. Thank you. श्री बदरुद्दीन अजमल जी। सभापति जी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे इस पोर्ट्स एंड शिपिंग मिनिस्ट्री के बजट के ऊपर बोलने का मौका दिया। चूंकि हमारे सर्बानंद सोनोवाल जी मिनिस्टर वो हमारे इलाके से है, उसी इलाके से मैं MP बन के आता हूं, इसलिए उनके बजट में तो मैं खिलाफ कर ही नहीं सकता। इसलिए जो भी बजट है, जैसा भी है, अच्छा है या बुरा है, पूरा का पूरा मुझे उसका सपोर्ट है। जी, आपकी तारीफ कर रहा हूं, बोलिए। जी जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं मिनिस्टर साहब से आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आजादी से पहले धुबड़ी पोर्ट, जहां से मैं जीत के आता हूँ सर, ये 3rd टाइम है मेरा इस हाउस में, और मैं बहुत ही अहमियत रखता था क्योंकि वहां से इलाके के लोग अपना प्रोडक्ट दूसरे सूबों और दूसरे मुल्क में भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे। सर, आसाम के लोग धुबरी पोर्ट से स्टोन्स, वेजिटेबल, जूट, राइस वगैरह का एक्सपोर्ट का काम करते थे। इसकी वजह से इलाके में बड़ी खुशहाली थी, चहल पहल थी। वहाँ के लोग माली एतबार से बहुत मजबूत थे, फाइनेंशियल एतबार से। मगर सर, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, मुल्क की तकसीम के बाद, पार्टीशन के बाद धुबड़ी और कोलकाता के बीच में शिप्स का रास्ता बंद हो गया, जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट था, क्योंकि वाटरवे का कुछ हिस्सा दूसरे मुल्क में चला गया। उसके बाद धुबड़ी पोर्ट बिल्कुल बेकार हो गया और वो बंद हो गया। सर, मैं आपके माध्यम से इसका असर लोगों की जिंदगी पर पड़ा, उनकी माली हालात खराब हो गई और धीरे धीरे धुबड़ी और इसके आसपास के इलाके मुल्क के सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ इलाकों में से एक हो गया। सर, मेरा क्षेत्र जो है धुबड़ी उस जमाने में पूरे आसाम का सबसे चहल पहल वाला इलाका था जब ये पोर्ट वहां तक था। उसके बाद वो अचानक बंद कर दिया गया। सर, मैं आपके माध्यम से अपने वहां की ये बात करता हूं कि उसकी वजह ये थी, रोड्स एंड रेलवे के बहुत सहूलियात इस इलाके में मौजूद नहीं थी। उसके साथ ही उसके जरिए सामान को दूसरे हिस्सों में पहुंचाना
बहुत महंगा हो जाता था, दूसरे मुल्क में भी उसको भेजने की कोई सूरत नहीं थी, इसलिए उनकी माली हालत दिन ब दिन गिरती चली गई। सर, मैं आपके माध्यम से 2006 में जब मैंने पॉलिटिक्स में कदम रखा, मैं वहां से सालमारा से पहले एमएलए बना, 3.5 उसके बाद मैं पार्लियामेंट में आया और आज तक आपके सामने मैं हूं। लेकिन यह है कि मुझे इस इलाके की हालत को बहुत करीब से देखने का मौका मिला सर लोगों की हालत बहुत नागुफ्ता भी है। वहाँ फ्लड इरोशन हर साल आता है, उसके वजह से उनके 10-10, 8-8 बीघा किलोमीटर उनका बैठ जाता है, वॉश अवे हो जाता है सर। इसीलिए कमजोर होते जा रहे सर। होने आने वाले हर साल फ्लड और इरोशन उनको तबाह कर देते हैं, उनके घरों और जमीन को रिवर ब्रह्मपुत्र बहा कर ले जाते हैं। वहां जाने आने का कोई सही रास्ता ना होने की वजह से कोई भी वहां जाकर इंडस्ट्री के लिए अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करता सर। इस हाउस में आने के बाद मैंने जिन चीजों के बारे में मजबूती से मांग किया था, उसमें कंट्रोल ऑफ फ्लड एंड इरोशन बार बार मैंने इसके ऊपर कहा, और आज भी फिर मैं सरकार से कहूंगा फ्लड और इरोशन को बंद किया जाए। ये हमारे लिए देव है, हम लोगों को भिखारी बना रहा है। वहाँ हर किस्म के लोग रहते हैं सर। उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ धुबड़ी फुलबाड़ी ब्रिज, रिवाइवल ऑफ रुपरी एयरपोर्ट, रिवाइवल ऑफ धुबड़ी पोर्ट, ये सब मेरे डिमांड के अंदर थे। मेरी खुशनसीबी है कि मेरे मिनिस्टर साहब भी मेरे आते ही सर्वानंद सोनवाल साहब तवज्जो चाहूंगा जी। ये हमारे बड़े भाई है या मैं इनका छोटा भाई हूँ, हम लोग दोनों जब भी मिलते हैं लगते तो आप ही बड़े हैं वैसे जी। उनको तो कहना पड़ेगा सर, हमारे मिनिस्टर है, उनको हम थोड़ा नहीं लगाएंगे तो काम हमारे कैसे बनेगा। इतना तो करने का मौका दीजिए जी। और वो हमारे गांव इलाके के जी सर। इस इलाके में इसमें हाउस के इस बारहा उठाया और मुझे खुशी है कि सरकार ने धुबड़ी पोर्ट को रिवाइव करने के लिए फंड दिया और फिर उससे बिजनेस एक्टिविटी शुरू हुआ, जो मिनिस्टर साहब जानते हैं सर। मगर अभी भी उसमें इम्प्रूवमेंट की बहुत जरूरत है, वहाँ मजीद सहूलत के लिए फंड की जरूरत है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूँ मिनिस्टर साहब के आपके माध्यम से कि वो इसके लिए फंड दिया के दे, ताकि धुबरी पोर्ट एक बार फिर से इलाके के लोगों के लिए बिजनेस पॉइंट बने और इलाके के लोगों की तरक्की हो सके सर। मैं आपके माध्यम से धुबड़ी के अलावा सदिया, डोला, पांडू, करीमगंज वगैरह के पोर्ट्स को भी मॉडर्नाइज किया गया है और काम जारी है। मुझे उम्मीद है कि हमारे मिनिस्टर साहब की निगरानी में ये सब जगह तरक्की करेंगे और कुछ ऐसा किया जाएगा जिससे वहाँ टूरिज्म को भी इसके लिए वो मिले, ताकि उन इलाकों के लोगों को। थॉमस जी सर आपने बहुत मौका दिया सब लोगों को, मुझे भी सर मिनिस्टर साहब हमारे इलाके कंक्लूड कीजिए। उनका अभी कंक्लूड कर रहा हूँ। तो सर पिछले दिनों ये हुआ कि शायद मिनिस्टर साहब के पास भी रिपोर्ट आया होगा, बांग्लादेश से कुछ जहाज आए थे जो पत्थर लेने जाते हैं यहाँ शाम से धुबड़ी वगैरह के इलाके से। वो धुबड़ी में उनके जहाज 4-5 जहाज फंस गए और उसमें बेचारे सैकड़ों मजदूर उसमें फंस गए। उनका यह हाल हो गया, सर्दी का मौसम था बहुत जबरदस्त, तो वो सर्दी की वजह से मर जाएंगे या भूख से मर जाएंगे। तो हमारे लोग कुछ 4-5 जहाज जब अटक गए तो लोग देखने चले गए, तो वो बेचारे रोए। मेरे पास भी टेलीफोन आया, तो हमने अपने लोगों को भेजे, कोई कंबल भेजे, ब्लैंकेट वगैरह भेजा। मेरा ये कहना है कि आइंदा मिनिस्टर साहब इसका ख्याल रखे, जहां भी पोर्ट बन रहा है कि इस किस्म के हालात आइंदा ना आए। इमरजेंसी जैसे हमारे एम्बुलेंस वगैरह होते हैं वहां जाए और उसको मदद कर। देखिए 5 बजे के आसपास रिप्लाई होना है। मेरा सभी से निवेदन है कि थोड़ा सा सीमित समय लें। थोड़ा सा समय हमको जी। Thank you, sir, for giving me an opportunity for participating in the discussion on the demands for grants to the Ministry of Ports, Shipping and Waterways. Sir, Kerala is blessed with a long coastal line, 576 kilometers right from the southernmost part of Kerala to Parashala to northern part of Kerala, Kasaragod. Kerala is also blessed with 2,560 kilometers long waterways.
Of these, the major waterway is East West Coast Canal, that is 616 kilometers long. Sir, there are, out of this 616 kilometers, the part of it is declared as National Waterway number 3, and balance is to be developed. Kerala has another 5 small waterways, which are also declared as national waterways. And out of these 5, 3 of them come in my constituency. Sir, the 5 waterways, the small waterways approved as national waterways are Alappuzha Changanasheri, 28 kilometers, NW 8, Alappuzha Kottayam Adirampuzha, NW 9, 38 kilometers, Kottayam Vaikam, NW 59, 28 kilometers, Udyogamandal Champakara, then AVM Canal, like that, these 5 canals are declared as natural waterways. Sir, what I want to describe here is the West Coast Canal is only partially developed. Only 328 kilometers is developed to the level of IWA standards. Balance is to be developed and declared as national waterways. Out of these 328, only 168 kilometers from Kollam to Kottapuram is developed in national waterway, IWA standards. Balance 160 kilometers are to be developed from Kottapuram to Kozhikode. Sir, the government of Kerala has submitted a detailed project report in March 2020, costing around 1,358 crore for development of this national waterway number 3, as well as other 5 smaller waterways, national waterways. But the government of India has not given the sanction for that. I would humbly request that the government may sanction these waterways, development of these waterways, which are very important for the state of Kerala. Sir, our former President of India, Dr. APJ Abdul Kalam, made a historic speech in the Kerala Legislative Assembly. I was also a member of the Legislative Assembly at that time. It was made on 28 July 2005. He presented to the legislators 10 missions for development of Kerala, for the prosperity of Kerala. The first priority he has given for tourism. The second priority was for development of waterways. Sir, today the Malayalam Manorama, the largest circulated vernacular newspaper in India, has started writing a series of serial from today, describing the need for developing the waterways of Kerala. Sir, all these bring to the core that waterways in Kerala has to be developed, and I would request the minister to spend more money in Kerala for developing the waterways in Kerala. By developing waterways, we have great benefits. The first one is only 1/4 of the cost is required for developing waterways as compared to rail or road. Second one, 1/5 of the cost is required for maintenance of the waterways compared to roads and railways. Third, the cost of cargo movement by road is 1 rupees per ton, whereas by rail it is 50 paise. Sir, one more point only. 37. It is only 37 paise per ton by waterways. Sir, there is no carbon emission, and this is best for the tourism development also. Only one point, sir. You should give me permission. The Kottayam port, that is just 15 kilometers away from my own house. It is the first port container and Kottayam Port and Container Terminal Services is the first joint venture minor port and inland container terminal in India. This is the only multi-modal ICD, inland container depot,
using inland navigation. This port is situated by the side of National Waterway number 9. The Kottayam port is using facilities of National Waterway 9, 3 and also 59. This port is promoted by public-private participation and under the assistance of Government of India. Sir, I have only one request regarding this. The Kottayam port has started export and import in full swing. They have till now handled 460,000 tons of cargo. Customs has received 61 crore rupees as revenue. The country has earned foreign exchange to the tune of 451 crore. In 2018, Kottayam Port started inland waterway. Sir, only one point. Sir, in 2018, Kottayam Port started inland waterway operations but discontinued due to the technical glitches in customs EDI. Sir, while filing the IGM and EGM, the only two modes of transport are available in the customs EDI, that is rail and road. While filing this IGM and EGM, these two modes are only available in the EDI. Sir, the port has taken up the issue. The trade and insurance companies are not willing to handle the container through inland waterway. Sir, the port has taken up the issue with the Commissioner of Customs and all other authorities. The office of the Principal Commissioner of Cochin has also requested the Customs Board to declare Kottayam Port ICD as Customs Board for restarting inland waterways operations. However, this please. Sir, for promoting and to restart the inland waterway movement from Kottayam Port, I request to incorporate inland waterways as transportation mode in the electronic data interchange EDI. Thank you, sir. Honorable Minister. Deputy Speaker, sir, port, shipping and waterways बजट डिमांड को समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। सर, देश में हिंदुस्तान का नाम ही और हिंदुस्तान के नाम से ही हिंद महासागर का नाम बना हुआ है। देश में 7,500 किलोमीटर समुद्र तट है, सदियों से है, और यही समुद्र तट का यातायात के लिए उपयोग करके ये देश समृद्ध हुआ करते थे। ये देश की समृद्धि का द्वार यही समुद्र तट थे, और इसका सबूत आज से 5,000 साल पहले हम समुद्र क्षेत्र में कितना सभ्य थे या तो हम कितना डेवलप्ड थे, उसका बेस्ट एग्जाम्पल आज विश्व में कहाँ भी 5,000 साल पुराना कोई पोर्ट जीवित नहीं है या तो कोई एग्जाम्पल नहीं है। लेकिन आप इंडिया में गुजरात में लोथल में आज भी 5,000 साल पुराना डॉक आज भी मौजूद है। देश में इंलैंड वाटरवेज की कोई नई बात नहीं थी। सदियों तक ये देश में इंलैंड वाटरवेज का उपयोग करके यातायात ट्रांसपोर्टेशन होता था। उसका भी एक एग्जाम्पल इंडिया में है धोलावीरा। इंडस रिवर के माध्यम से धोलावीरा होके इंडस रिवर गल्फ ऑफ कच्छ में मिलती थी, और ये जमाने में वहां एक अच्छा इंलैंड वाटरवेज के आपने मोहेंजोदड़ो पिक्चर किसी ने देखा होगा, उसमें इंडस रिवर्स के माध्यम से धोलावीरा तक, मोहेंजोदड़ो से धोलावीरा तक ट्रांसपोर्टेशन यातायात इंलैंड वाटरवेज से होता था। ये हमारी समृद्धि का रीजन था। लेकिन देश की आजादी के बाद देश के समुद्र तट, देश के पोर्ट वो ज्यादातर उपेक्षित रहा। देश में ट्रेन आई, उसका उपयोग होता रहा, रोड उसका उपयोग होता रहा, उसका एक्सपेंशन होता रहा, उसके पर बजट खर्च होता रहा। लेकिन दुनिया का ये भी एक क्रम है, जिन्होंने समुद्र पर राज किया है उन्होंने ही विश्व पर राज किया है।
और इतिहास उसका सबूत है। यही रास्ते से सभ्यता एक दूसरे प्रांत में, एक दूसरे क्षेत्र में गई, एक दूसरे क्षेत्र से यहाँ आई। 7,500 किलोमीटर हमारा समुद्र तट को उपयोग करते हुए आप ईस्टर्न कोस्ट में देखिए, एक समय था जब चालुक्य, मगध और उस वक्त के जो साम्राज्य थे, कौटिल्य सब साम्राज्य से ईस्ट के कंट्री के साथ यातायात होता रहता था, ट्रांसपोर्टेशन होता रहता था। वेस्टर्न कोस्ट से आप देखिए, आप अफ्रीका की कोई भी कंट्री में जाइए, अफ्रीका की कोई भी कंट्री में वेस्ट कोस्ट पर कोई ना कोई सिटी का नाम, आज ओमान में जाए वहां मस्कती मार्केट है, आप दुबई जाए तो वहां भी सलाया स्ट्रीट है, सलाया गुजरात का छोटा सा पोर्ट है। ये इसलिए है कि क्योंकि यही समुद्र तट से हम दुनिया में ट्रांसपोर्टेशन करते थे, दुनिया में जाते थे और हमारा बिजनेस और ट्रेड यही समुद्र तट से समृद्ध होता था। लेकिन ये समुद्र तट की उपेक्षा के बाद जब 2014 में हमारी बनी, तब ये पोर्ट सेक्टर थी और उसके बाद 2016 में MOS बना था। मैंने उस समय देखा, अध्ययन किया, तब पता चला कि समय के साथ हमारा पोर्ट नहीं बदलने से हमें क्या क्या दिक्कतें हो रही है, क्या क्या मुश्किलें आई। देश में महंगाई बढ़ने, या तो देश में की कमोडिटीज, देश का सारा यूनिवर्सल दुनिया का लॉजिस्टिक कॉस्ट अपने विश्व की जीडीपी के सापेक्ष में 9% है। इंडिया का जीडीपी कॉस्ट अपनी जीडीपी के सापेक्ष में इंडिया में 40% है। क्यों है? जब उसका एनालिसिस होता है पता चलता है कि देश में पोर्ट सेक्टर में जो मॉडर्नाइजेशन और डेवलपमेंट होना था वो नहीं हो पाया। देश में हमारे बाहर मेजर पोर्ट है और अदर पोर्ट है। ये पोर्ट की ड्राफ्ट 10 मीटर, 12 मीटर, 10-12 मीटर, और समय बदल गया। दुनिया में 20-20, 18-18, 19-19 मीटर ड्राफ्ट वाला वेसल, और उसको ध्यान में रखते हुए जब शिप की डिजाइन होती है, जो नए शिप बनते हैं, नए वेसल बनते हैं, तो वो अपने सारे दुनिया का एवरेज ड्राफ्ट क्या है पोर्ट का, उसको ध्यान में रखते हुए ये लोग डिजाइन बनाते थे। तो बड़े बड़े 18-16 मीटर ड्राफ्ट में चलने वाला दुनिया में शिप बनने लगा, और हमारा पोर्ट में 10 मीटर हो तो स्थिति क्या होती थी माननीय अध्यक्ष महोदय? उसको बड़ा शिप दूर रखना पड़ता था, वहां से कार्गो छोटे शिप में डालते थे, ये छोटे शिप फिर पोर्ट में आते थे। पोर्ट में भी मैकेनाइज्ड इक्विपमेंट होना चाहिए, वो नहीं होता था, इसलिए फिर उसको दिक्कत होती थी। ऐसा करके जब इंपोर्ट कार्गो इंडिया में इतना महंगा हो जाता था और हमारा एक्सपोर्ट कार्गो भी इस दृष्टि से महंगा होता था, तो देश में पोर्ट में ड्राफ्ट ये सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट थी। और मैं ये भी सुनता था, और मैं मंत्री बना था उस वक्त, मुझे पता है, मैं यही न्यूज़पेपर बंगाल में जाता था, या तो बंगाल के एम्प्लॉइज का मेरे पास रिप्रेजेंटेशन आता था। लोग आके कहते थे ये कलकत्ता पोर्ट जिंदा तो रहेगा ना, पोर्ट चलेगा ना? घाटा में चल रहा है। मुंबई पोर्ट घाटा में चल रहा है, हमारा कोची पोर्ट घाटा में चल रहा है, सभी पोर्ट घाटा में चल रहे थे। वहां हजारों की संख्या में एम्प्लॉइज थे, उसकी सैलरी का क्या, उसका भविष्य का क्या। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने निर्देश किया कि हमें पोर्ट सेक्टर में तुरंत ही डेवलपमेंट हाथ में लेने की आवश्यकता है, पोर्ट को बचाना है। आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, जब कलकत्ता के 150 वर्ष उसके पोर्ट का हुआ और उस वक्त वहां कार्यक्रम हुआ था, उस वक्त वहां के एम्प्लॉइज एश्योर्ड थे कि हमारा पोर्ट आज प्रॉफिट में है। प्रॉफिट में इतना ही नहीं, लेकिन हमारे पोर्ट के सभी एम्प्लॉइज 15,000 रिटायर्ड एम्प्लॉइज थे। उसके मन में चिंता थी, बुजुर्ग थे, एजेड थे, क्या हमें पेंशन मिलेगा, नहीं मिलेगा? जी नहीं, LIC में सभी की पेंशन की रकम डिपॉजिट कर दिया और उसको एश्योर कर दिया, सिक्योर कर दिया कि आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमें नया रास्ता ढूंढा, नई व्यवस्था खड़ी की, पोर्ट में ड्राफ्ट बढ़ाया, ड्राफ्ट बढ़ाने के बाद ज्यादा कार्गो हैंडल कैसे हो, इनलैंड वाटरवेज के साथ उसके साथ जोड़ा। यहाँ केरला की बात हो रही थी, कोची केरला का पोर्ट है और कोची पोर्ट घाटा में चल रहा है। क्या करना चाहिए पोर्ट को? पोर्ट का वहां से कार्गो हैंडलिंग में कैसे सुविधा हो, वहां स्टाफ था, वहां कई स्किल मैन पावर थे, वहां इंजीनियरिंग विंग्स थी। और उस वक्त हमने सोचा कि ये पोर्ट में ड्रेजिंग करने के लिए खर्च लग रहा है, तो ड्रेजिंग मटेरियल तो सैंड है, और सैंड का कंस्ट्रक्शन और उसके अलावा कई चीजों में उसका उपयोग हो सकता है। तो उस वक्त हमने एफर्ट लिया कि क्या इस सैंड को बेच के हम इनकम कर सकते हैं क्या? आज देश में सभी पोर्ट में ड्रेजिंग हो रहा है,
ये ड्रेजिंग से निकलने वाली सैंड को बेच के 25 से 50 करोड़ रुपया प्रति वर्ष भारत पोर्ट मिनिस्ट्री कमा रही है। ये पोर्ट कमा रहा है, उसकी इनकम ये पोर्ट में जाएगी। आज कोची पोर्ट धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा है, उस स्वयं एफर्ट लिया है, मैं उसकी सराहना करता हूं। और उसमें कोई वहां लक्षद्वीप है, वहां का कार्गो हैंडलिंग वहां से होता है, वहां उसका पोर्ट चलाने के लिए क्योंकि यूटी है और यूटी के पास सारी व्यवस्था नहीं है, तो आज कोची पोर्ट उसको सपोर्ट कर रहे हैं और ये सपोर्ट के सापेक्ष में उसको मदद कर रहे हैं, उसका कार्गो हैंडलिंग में मदद कर रहे हैं, उसका पोर्ट मैनेजमेंट में मदद कर रहे हैं, उसकी इनकम कोची पोर्ट को हो रही है। वहां कोची में ही हमारा कोची शिप यार्ड है, शिप बिल्डिंग में आज अच्छा काम कर रहा है, दुनिया में नाम बना है। हमारा विक्रांत ना कोचिंग विक्रांत आज इंडिजिनियस आत्मनिर्भर भारत के तहत वो प्लेन हेलीकॉप्टर के साथ समुद्र में जाके देश की सुरक्षा कर सके, ऐसा वेसल्स, ऐसा आयुध वाले शिप हमारे कोची शिपयार्ड बना रहा है। ये हमारे लिए गौरव की बात है। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके साथ कैसे कैसे बदलाव लाने की आवश्यकता थी और क्या क्या हमने किया। एक एडमरिटी एक्ट था, वो 1890 में बना हुआ था और 1819 में जब अंग्रेज ने एडमरिटी एक्ट बनाया, उस वक्त केवल देश में उसके उस वक्त जो प्रांत होंगे और 4 ही हाई कोर्ट को देश में 4 ही हाई कोर्ट को एडमरिटी के लिए केस चलाने का अधिकार था। हमने एडमरिटी बिल को 137 इयर्स के बाद रिफॉर्म करके 2017 में उसको रिप्लेस किया और नया बिल लाया। एड टू नेविगेशन लाइट हाउस वो 1927 का एक्ट था और लाइट हाउस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देश के समुद्र तट पर लाइट हाउस सदियों से बना हुआ है और वो यूनिक प्लेस पर बना हुआ है। क्या उसको टूरिज्म के लिए हम उपयोग नहीं कर सकते हैं? ये हमने एड टू नेविगेशन लाइट हाउस एक्ट लाके ये सारा हमारा लाइट हाउस है उसको मॉडर्नाइजेशन और ये लाइट हाउस को पीपीपी मोड से हम टूरिज्म प्लेस के रूप में डेवलप करें। आज ऐसे 12 से 13 लाइट हाउस डेवलप हो चुका है। लोग टूरिज्म पर्पस व्यू से वहां जाते हैं, एंजॉय करते हैं। इस समय के साथ बदलना आवश्यक होता है। ट्रेडिशनल चीजें समय के साथ हम जब नहीं बदलेंगे तो हम पीछे छूट जाते हैं। हमें पीछे नहीं रहना है, इसलिए जो रिफॉर्म करने की आवश्यकता थी वो हमने रिफॉर्म किया। इनलैंड वेसल एक्ट 1917 का था, उसको भी रिप्लेस किया। पोर्ट अथॉरिटी एक्ट उसको भी रिप्लेस किया। जितने पुराने एक्ट था वो एक्ट को समय के अनुसार बदलने की आवश्यकता थी। उसको बदल के हम हमारे मैरीटाइम सेक्टर को कैसे आगे बढ़ाए, हम हमारे मैरीटाइम सेक्टर को कैसे आगे ले जाए, इस दिशा में हमने काम किया। इतना ही नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, जब देश में दुनिया में सी फेरर के लिए, सी फेरर एक रोजगारी का सबसे बड़ा माध्यम है। समुद्र में नाविक के रूप में जाना, इंजीनियर के रूप में जाना, टेक्नीशियन के रूप में जाना, जब समुद्र में अच्छी सैलरी और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अनुसार उसको सैलरी मिलती है। और दुनिया में करीबन 40 लाख समुद्र में जॉब अपॉर्चुनिटी है। एक छोटा सा फिलीपाइंस कंट्री है, उसका सी फेरर वो है 8 लाख। छोटे छोटे कंट्री 8, 10, 4, 5 लाख सी फेरर है और एक स्वीपर के रूप में भी समुद्र में जाते हैं तो उसकी मिनिमम सैलरी $2,000 होती है, यानी कि लाख सवा लाख रुपीज होती है। और वो 6 महीने जाना होता है, 6 महीने घर पे रहना होता है। टेक्नीशियन है तो उससे ज्यादा सैलरी, और उसमें जो कुक है तो उसको इस टाइप की सैलरी, इंजीनियर है तो इस टाइप, बहुत बड़ी सैलरी की अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन 2014 के पहले देश में दुनिया के सी फेरर में हमारा शेयर नगण्य था, केवल 94,000 था। हमने सोचा कि ये सी फेरर के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए क्या कर सकते हैं। उसको बेस्ट ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, बेस्ट सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हमारी अच्छी होनी चाहिए, हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का एक मानांक होना चाहिए। इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पास होने के बाद जब समुद्र में जाने के लिए, ये तो 7,500 किलोमीटर समुद्र तट पर रहने वाले सभी लोग ट्रेडिशनल नाविक है, उसमें स्किल है ही, लेकिन उसको फॉर्मलाइज करने की आवश्यकता थी। स्विमिंग करना एक उसमें आवश्यक होता है।
तो समुद्र तट पर रहने वाले बच्चे के बार के लोग वो स्विमिंग जानते ही है, उसको फॉर्मल सर्टिफिकेशन हो जाए, सर्टिफिकेट मिल जाए, उसको जॉब अपॉर्चुनिटी बनेगी। इस टाइप की ट्रेनिंग देना शुरू किया और इंटरनेशनल बेंचमार्क के अनुसार उसका सर्टिफिकेशन किया और इस सर्टिफिकेशन से आज सम्मानीय सदन में मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि देश में 2,40,000 सी फेयर आज देश में दुनिया में समुद्र के माध्यम से रोजगारी के लिए जा रहे हैं और ये संख्या आगे बढ़े इस दिशा में प्रयास हो रहा है। वैसे ही कोस्टल शिपिंग हमारे यहाँ ट्रेन का और रोड का उपयोग होता रहा, लेकिन समुद्र तट पर कोस्टल शिपिंग के माध्यम से हम कार्गो एक जगह से दूसरे जगह पे नहीं ले जा सकते। तो जब हम स्टडी कर रहे थे तो संज्ञान में आया कि क्या है, तो कि कई पुराने ऐसे रूल्स रेगुलेशन है, ये रूल्स रेगुलेशन को हम जो चेंज नहीं करेंगे तो कोस्टल कार्गो नहीं बढ़ेंगे। कोस्टल कार्गो बढ़ाने के लिए हमने कोस्टल शिपिंग बिल के संदर्भ में विचार किया और कई ऐसे रिलैक्सेशन और प्रावधान किया, जैसे इनलैंड वाटरवेज से कोई वेसल आए और उसको कोस्टल मूव करके फिर एक दूसरी जगह से चले जाए। फॉर एग्जांपल, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक कंटेनर आया, दिल्ली से कंटेनर निकला है, वो गुजरात में कंडला पोर्ट पर पहुंचा, कंडला पोर्ट से वाटरवेज का उपयोग करके वो कोची जा सकता है, वो कालीकट जा सकता है। वहां पहुंचाने के लिए वो कोस्टल शिपिंग का उपयोग करे, उसके लिए भारत सरकार ने जो कॉम्प्रिहेंसिव सोच के साथ काम किया, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक का उपयोग करके एक जगह से ट्रेन से आवश्यकता हुई तो ट्रेन से रोड, इनलैंड वाटरवेज, जहां भी सुविधा के अनुसार मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन को सुदृढ़ करने के लिए कोस्टल शिपिंग को बढ़ावा देना, उसके ऊपर बहुत काम हुआ। और मुझे बताते एक दूसरे माननीय स्पीकर महोदय, कंटेनर बात छोटी छोटी है लेकिन देश के लिए उसका कितना इंपॉर्टेंस होता है। ये देश में आईएमओ स्टैंडर्ड का कंटेनर ही नहीं बनता था कंटेनर, और देश में 9 लाख कंटेनर की प्रतिवर्ष डिमांड है। इस बार जब कोविड क्राइसिस के दरमियान कई कंट्री में लॉकडाउन होने से कंटेनर फंस गया और ऐसी स्थिति में देश में एक्सपोर्ट करना था, कंटेनर नहीं थे, इंपोर्ट करना था, कंटेनर नहीं थे। इंडिया में आईएमओ स्टैंडर्ड का कंटेनर बनता नहीं था, इसलिए वो दूसरे देश में जा नहीं सकता था। और उस वक्त ये देश ने ही एफर्ट लिया और हिंदुस्तान में एक कंटेनर बनाने, बात छोटी छोटी है लेकिन उसका परिणाम कैसे होता है, हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर कितनी इफेक्ट होती है। माननीय स्पीकर महोदय, देश में आज आईएमओ स्टैंडर्ड का कंटेनर आत्मनिर्भर भारत के तहत बनने लगा है, देश में बिकने लगा है और 97% शेयर आज 97% शेयर केवल चाइना से ही दुनिया को लेना पड़ता है। आज इंडिया भी कंपटीशन में आ गया है और इंडिया भी दुनिया को एक कंटेनर बना के आज के दिन में दे पाए, ऐसी स्थिति में भारत पहुंच गया है और आने वाले दिनों में उसका भी उपयोग हो सकता है। दूसरा, ये क्रूज टूरिज्म, समय के अनुसार क्रूज टूरिज्म की बहुत बड़ी डिमांड है। लोगों को क्रूज में एंजॉय करने के लिए जाना, वैकेशन है तो चलो बच्चों को लेके हम क्रूज में चले जाए। दुनिया के लोग क्रूज के माध्यम से एक दूसरे के कंट्री में वो मुलाकात लेते हैं, लेकिन भारत में क्रूज टूरिज्म, विदेश का क्रूज, जब कोई दुनिया से क्रूज आता है, टूरिस्ट आता है तो स्वाभाविक तौर पे पैसा लेके आता है। देश में आएंगे तो खर्च करेंगे तो देश में पैसा आएगा, विदेशी मुद्रा आएगी। लेकिन देश में क्रूज टूरिज्म, क्रूज इंडिया में आता ही नहीं था। छोटी छोटी चीजों को रिफॉर्म करने से कितना बदल आता है। माननीय स्पीकर महोदय, जब क्रूज आता है तो उसकी, जब वो कोई पोर्ट पर लैंड करते हैं तो उसके साथ एक टाइप का, क्योंकि विदेशी लोग हैं और उसके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, तो हमारे यहाँ ये काम दिया गया था, अब ये पुलिस करेगी। वो आते हैं तो पुलिस उसके साथ, पुलिस का तो काम रक्षण करना है, वो उसको कैसे ट्रीट करना है उसके बेचारे का काम ही नहीं है। तो वो लोग कंप्लेन करते थे, उसकी कंप्लेन बुक में देखो तो आपके ये लोग थे और हमें यहाँ जाना था, हमें ये करना था, क्योंकि उसका काम नहीं था। उसको वहां आके देश के अंदर जाना है तो फिर इमिग्रेशन करना पड़ता था। अरे भाई, इमिग्रेशन के अलावा हमने छोटे छोटा कैसा बदल किया। ये जो एक डिसिसिव लीडरशिप होती है तो कैसा बदल होता है, मैं स्पीकर महोदय बताना चाहता हूँ। हमने कैसा किया कि उसको ट्रीट कौन करेंगे,
तो कि पोर्ट के लोग करेंगे। उसको इमिग्रेशन करना है तो इमिग्रेशन नहीं करना है, वो देश में आएंगे तो उसको एक कार्ड दिया जाएगा और एक कार्ड जितने पोर्ट पर उतरेंगे एक कार्ड बताना और देश में चले जाए और शॉपिंग करके फिर पोर्ट में बैठ जाए। उसकी व्यवस्था खड़ी हो गई। उसके अलावा ये जो टूरिस्ट यहां आए तो उसको कोई दिक्कत ना हो, ये सारा प्रावधान किया। उसका परिणाम क्या आया? पहले प्रति वर्ष 2014 के पहले मैं कंपैरिजन करके दिखाता हूं कि पहले केवल 200 कॉल इंडियन पोर्ट पर 200 समझना, इंफॉर्मेशन अच्छी मिलेगी। मैं बोल रहा हूं एकदम इंफॉर्मेशन के साथ बोल रहा हूं आपको, डाटा के साथ। 200 क्रूज 200 कॉल करते थे इंडिया में और एफर्ट किया, उसको सुविधा दी, व्यवस्था करी, तो पहले साल में 25-30 हजार टूरिस्ट आते थे क्रूज से। आज ये टूरिस्ट 1.5 लाख से अबाउट 2 लाख तक पहुंच गए। पहले 200 कॉल होते थे, 450 कॉल से अधिक कॉल होने लगे। ये सुविधा, छोटे छोटे बदलाव से क्या क्या परिणाम आता है ये मैं शॉर्ट में बता दूंगा, लंबा समय नहीं लूंगा। आपकी टोकरी लगाने के पहले मैं बोल दूंगा। थोड़ा ज्ञानवर्धन करा रहा है। और छोटी चीज माननीय स्पीकर महोदय, देश में शिप बिल्डिंग एक रोजगार का बड़ा अवसर होता है और ट्रेडिशनली ये देश में शिप बनता था। और आज भी आप लंदन के म्यूजियम में जाएंगे तो वहां देखेंगे इंडिया में बना हुआ और 80 इयर्स तक सेल किया हुआ इंडियन मेड शिप उसके म्यूजियम में है। शिप कैसे बनाना, शिप बिल्डिंग हमारी ट्रेडिशनल स्किल थी, लेकिन ये स्किल चली गई। उसको फिर से लाने के लिए इंडिया में शिप बिल्डिंग को बढ़ावा देना है, रोजगारी को अवसर प्राप्त करना है, तो क्या करें साहब? देख, डिजाइन, पहले शिप बनाने के लिए पहले डिजाइन बनती है, डिजाइन के बाद एक मॉडल बनता है और मॉडल तो इंडिया में बना लिया, लेकिन ये मॉडल को टेस्टिंग करना पड़ता है और टेस्टिंग की फैसिलिटी इंडिया में नहीं थी। तो हमारे यहाँ शिप बिल्डर ने उसको टेस्टिंग कराने के लिए दुनिया के 2-3 कंट्री टेस्ट करती थी, वहां जाना और 6 महीने के बाद वो टेस्टिंग करके आता था, तब तक यहाँ उसका काम बंद होता था। ये शिप बिल्डिंग के लिए मॉडल टेस्टिंग की फैसिलिटी हमने देश में खड़ी की और उसका लाभ देश की शिप बिल्डिंग को मिल रहा है। देश में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन को हमने प्रमोशन दिया और इंडियन शिप, इंडियन फ्लैग, देश के शिप को काम मिले और हमारे ही शिप से कार्गो मूवमेंट हो, इंपोर्ट हो, एक्सपोर्ट हो, इसलिए हमने एक पीएलआई स्कीम लाए और ये पीएलआई स्कीम का लाभ लेके इंडियन फ्लैग भी बढ़ रहा है। इंडियन फ्लैग बढ़ेगा, इंडियन शिप बढ़ेगा तो इंडियन शिपिंग कंपनी को इनकम होगी, इंडियन शिपिंग कंपनी को इंडियन इनकम होगी, रोजगार भी मिलेगा और उसके साथ इंडिया में रोजगारी का सर्जन के साथ टैक्स की भी आवक होगी। इस दृष्टि से शिपिंग सेक्टर को होलिस्टिक दृष्टि से भारत में मोदी जी के नेतृत्व में डेवलप किया है। माननीय मंत्री जी यहाँ जो बजट डिमांड लेके आए हैं उसको समर्थन करते हुए श्री शशि मैं थरूर आपको जी, धन्यवाद करता हूं। तो नहीं, you ask no, only ask the minister. Now please, it was intervention only. नहीं, जब आप बोले, when you speak then please put it. No, शशि थरूर जी अब बैठिए प्लीज। वो बहुत समर्थ, he is very capable member of parliament, you need not to support him. Please, शशि थरूर जी, you ask anything from the minister only. It was an intervention only. Yes, please. Mr. Chairman, thank you. Though as you can see, we are surprised that a cabinet minister. And please be brief. You can speak for hours. Give us half the time that he took, sir. The minister took. I just want to say that, in fact, though we are a bit surprised to see a cabinet minister speaking on a subject that is no longer his portfolio, it's nonetheless, he has said a lot of things that I'm very happy to agree with. In fact, ships carry 90% of the world's goods across the globe. And in fact, in India's case, it's even more because 95% of the volume of cargo that comes to our country comes by shipping, not by any other means, 68% of the value too. So for us, ports are important. We have this wonderful coastline, one of the most impressive coastlines of the world, and we should have, by rights, developed our ports in a very significant way, which I'm sorry to say, he is right, we have not yet done so. But I have to ask, in that case, why is it that the ministry has continuously underutilized the resources that were given to it by this parliament? Year after year after 2017-18, we're seeing underutilization of resources. Now, so I do want to say that despite India's economic growth and all the prospects, the vast majority of the container ships coming to India, sir,
we're not getting them here because our ports aren't good enough. They're being transshipped outside the country, mainly at Colombo in Sri Lanka, Singapore, Port Klang, Tanjung Pelapas in Malaysia, Salalah in Oman, Jebel Ali in Dubai, that we've all talked about elsewhere. And the problem is our country lacks a major all-weather deep water port near the international sea routes to handle large mainline container vessels. This has also given China a tremendous dominance in the Indian Ocean. We have a situation where Colombo today is transshipping more Indian goods for India, than any of India's major ports. In fact, all of India's major ports put together are not matching Colombo. Now, what's worrying me about this is that there's a serious geostrategic angle for us being dependent upon Colombo for such a large portion of our goods, because it is, after all, a port in which the Chinese are extremely active. A Chinese firm has just been awarded the Eastern Container Terminal at the Colombo port, and we are in the pick-win situation that India prohibits Chinese firms from investing in or building our ports, but in effect, we are condoning the transshipment of the lion's share of our cargo via a port operated exclusively by China until recently, and where Chinese Navy vessels and submarines were regularly calling for resupply. Is this entirely wise, sir, for a country like India? I do want to point out that on top of that, there is a particular challenge because increasingly shipping is growing bigger. There is ships of over 20,000 TEUs are the future of sea cargo because they involve lower costs per container shipped. But bigger ships require deeper ports. And this, in our case, has to be, unfortunately, extremely expensively created through dredging because of the very high logistics costs involved. The major shipping lines are not stopping in our ports. There is lack of a significant domestic transshipment port. Even though we have 7,516 kilometers of coastline, nearly 200 ports, even our so-called 13 major ports have a depth of only between 9 to 11 meters, far from the 20 that modern shipping requires. Now, this in effect means that our economy is helping to pay for foreign ports like Colombo, Salalah, Tanjung Pelapas, and so on. While our exports remain relatively uncompetitive, our imports become more expensive entirely because of our lack of a deep water transshipment terminal. So this is where my constituency has the answer. The Vizhinjam port is an amazing place because it is right near the international shipping lines. It is a port which has extremely decent connections which can be improved by the government. It has a natural deep draft of 20 to 24 meters. So we don't need to spend money dredging. Mr. Mandavia talked about selling the sand from dredging, but the sand will not fetch the price, the cost. Yeah, it's mud, and on top of that, it costs much more to dredge than to sell. So the problem is that despite what he said, our real need, sir, is to actually avoid the dredging, and Vizhinjam provides the answer to that. We have the geological features that contribute towards preventing excessive spending on dredging operations because we actually have the minimal littoral drift, the depth itself, the turning radius, all that we need. Now, what I wanted to say to you, sir, Mr. Chairman, is that given that the 21st century ports require longer terminals, deeper drafts, and bigger turning basins, we have an answer in my constituency. To my surprise, the government has so far not yet acceded to our recommendation to declare Vizhinjam as a major port. In fact, it should be the major port in the country instead of continuing to be a minor port under state government jurisdiction. I wanted to say in particular that given the fact that we have all these challenges, for us to take a port which offers all of this, on top of that minimal operating and maintenance costs, and on top of that, the ability to deploy best-in-class equipment that's being built from scratch right now without being burdened by legacy facilities, even though it was a port in the days of the Roman Empire. Today, it has essentially been neglected for such a long time. We're building a wholly new 21st century port. It seems to me we will have, for the first time in India, a port that has the capability to handle the largest ships in the world as efficiently as Singapore, Hong Kong, or Rotterdam for decades to come. For this reason, sir, I have a few specific recommendations to the minister. Number one, I urge the minister to declare Vizhinjam as a major port. This is not a very difficult challenge. The obvious facts speak for themselves. Number two, sir, the construction has been going rather slowly because obviously the central government is not involved. And we had a cyclone Oki and so on, which delayed construction, many problems.
anything that can be done by the central government to facilitate the development of the hinterland area of the Vilnius port would strengthen the supply chain of shippers and logistics service providers, promote interaction with consumers, and enhance the port-related services, including the cruise ships that Mansukh Mandavia spoke about a minute ago. In addition, we need the central government to declare Vilnius as a special economic zone in order to enhance the economic capacity and the operations of the port. Third, there's now talk of restoring the decades-old cabotage rules. Bad idea, sir. The fact is that the government must continue to provide relaxations under the cabotage law to promote free trade and encourage economic activity at major transshipment hubs in India. Who are we protecting? No Indian company has 20,000 TEU ships. Let us not make a cabotage into an obstacle for our own development. And I do want to say, sir, that there is a further problem which when you had clubbed all the topics together. Conclude. When you had clubbed all the topics together, I was going to mention it because Mr. Gadkari knows we have a national highway from Vilnius all the way to Tamil Nadu that's supposed to carry on to Kanyakumari. It is almost finished up the Tamil Nadu border, but nothing is happening on the other side of the border. And we urge the government to really crack the whip and ensure that the road carries on all the way to Kanyakumari. So it's a national interest I'm talking about. I've only taken 1/4 of the time of the previous speaker. There is time limit. Finally, sir, in inland waterways, I want to support my colleagues at Thomas Chaikan. We need inland waterways very seriously, and the Ananta Victoria Marthandam Canal would be an excellent way of opening up the connectivity to the import as well. I certainly want to support that. Then there is the equal concern that the Ministry for Inland Waterways has also had a shocking underutilization of funds sanctioned last year. You know, they only spent 20 crores out of 250 crores allocated, sir. So when we are talking about demands for grants, we want them to spend the grants they get. And I would urge the minister to ensure that he remedies the underutilization of funds in both his key ministries. Finally, I've mentioned in Parliament during a question hour that there are some very important legal instruments internationally that India is overdue in ratifying. I hope that he will do that. I also want to stress that there has to be a new legislative framework for the port sector. The Indian Ports, Major Ports Act, the Indian Vessel Act, and so on. The government has to absolutely modernize them. There have been a number of concerns expressed. And I would urge, sir, that the minister treat this matter with a vision to make India a land of major ports of great significance. देखिए सागरों की बात हो रही है, गागर में सागर बड़ी प्रसिद्ध कहावत है. Please do that. संक्षेप में दानिश अली जी. Thank you very much, गागर में सागर Sahab, for allowing me to speak on the demand for grants to the Ministry of Ports, Shipping and Waterways. मेरे यहाँ सागर तो नहीं है, लेकिन हाँ गंगा जी है अब मेरे लोकसभा क्षेत्र में. और वाकई जो मौजूदा हेल्थ मिनिस्टर हैं और पुराने शिपिंग के मिनिस्टर थे मनसुख भाई मंडाविया साहब ने बहुत एनलाइटन किया हाउस को. वो मैं देख रहा था पहली बार शायद किसी मिनिस्टर ने इतना लंबा इंटरवेंशन किया, लेकिन एटलीस्ट हम लोगों को जानकारी मिली. सर, ये विभाग बहुत इंपॉर्टेंट विभाग है. मैं इसकी हिस्ट्री में जा रहा था तो पता ये चला कि 1942 में इस डिपार्टमेंट का नाम था वॉर ट्रांसपोर्ट, डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ट्रांसपोर्ट. कई बार चेंज हुआ है और ये सच्चाई है कि स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये मिनिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है. पहले जमाने में हवाई जहाज के थ्रू युद्ध लड़े गए, फिर थल सेना के थ्रू युद्ध लड़े गए, लेकिन आने वाला वक्त जो है वो पानी का है. और हमें अपने जो कोस्टल लाइन है उसकी सिक्योरिटी का भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा. मैं आपके माध्यम से सरकार को सिर्फ
ये एक चेतावनी के तौर पर कहना चाहता हूं कि डिसइन्वेस्टमेंट के नाम पर, प्राइवेटाइजेशन के नाम पर हमारी स्ट्रेटेजिक चीजें जो हैं किसी एक कॉरपोरेट हाउस को ना दी जाएं, क्योंकि अगर किसी एक आइडेंटिटी को, एक कॉरपोरेट हाउस को हम अपने सारे बंदरगाह भी दे दें, हम जो है सारे एयरपोर्ट्स भी दे दें, तो आने वाला कल कहीं ना कहीं असुरक्षा महसूस करेगा। मेरा किसी एक कॉरपोरेट हाउस में कोई पर्सनल वो नहीं है, लेकिन मैं एक स्ट्रेटेजिक व्यू लेते हुए ये बात सदन के सामने रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूं कि जब आने वाली जनरेशन पढ़े तो उसको ध्यान में रखा जाए। माननीय सभापति महोदय, ये बात सही है कि हमारे यहाँ जितना कार्गो इंपोर्ट होता है तकरीबन 90-95% पोर्ट्स के ही माध्यम से आता है, और इस इंडस्ट्री में वाकई बहुत स्कोप है। तकरीबन 72,000 किलोमीटर के करीब कोस्टल लाइन है हमारे पास। मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना ही कहूंगा कि शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में बहुत स्कोप है। हम भी गए थे पिछले दिनों, क्योंकि ये खाली इनका ही डिपार्टमेंट नहीं बल्कि डिफेंस का डिपार्टमेंट भी ऐसी पीएसयूज हैं, उनको मदद करने की जरूरत है और बहुत स्कोप है उसमें, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपना इंटरवेंशन के दौरान कहा। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए आपके माध्यम से यही कहूंगा कि पिछले दिनों एक अखबार में खबर आई कि शिप इंडस्ट्री से ही रिलेटेड कि कोई एक कौन सा वो एबीजी शिपयार्ड कंपनी कोई थी, तकरीबन 22,500 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड घोटाला बैंक्स का लेकर के भाग गया। तो ऐसे जो कॉरपोरेट्स हैं या जो कंपनी हैं ऐसी योजनाओं का जो फायदा उठाती हैं, उन पे हमें लगाम लगाने की जरूरत है। अब 22,500 करोड़ वो गरीबों का, टैक्स पेयर्स की मनी है जो बैंक्स की थी, जिनको लूट करके चले गए। सभापति महोदय, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जो वाटरवेज डिपार्टमेंट है, क्रूज की बात हुई यहाँ, अंतरराष्ट्रीय श्रीमती टी सुमति, सर मैं ऑलरेडी 5 मिनट्स सर अकेला बोल रहा हूँ पार्टी की कोई तरफ बात से। नहीं, 5 मिनट हो चुके हैं दानिश भाई, देखिए आपका भी क्षेत्र मेरे यहाँ से मिला हुआ है, 5 मिनट हो चुके हैं। मैं इतना ही कहूंगा सर कि हमारे यहाँ गंगा है, ब्रज घाट और तिगरी धाम। मैं चाहूंगा माननीय मंत्री जी से कि आप मेरे क्षेत्र में स्टडी कराइए। दिल्ली से 1 घंटे का रास्ता है बाय रोड। अगर उस ब्रज घाट तिगरी धाम को डेवलप किया जाए, टूरिज्म के तहत वहां पर नौकाएं चलाई जाएं, तो मैं समझता हूं कि दिल्ली के आसपास सबसे बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट वो हो सकता है, क्योंकि हमारे एरिया में दिल्ली के आसपास सर कहीं ऐसी जगह नहीं है। मैं आपके माध्यम से यही उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसका संज्ञान लेंगे और अमरोहा लोकसभा क्षेत्र के ब्रजघाट और तिगरी धाम में जो है नौका विहार चलवाने का काम। बहुत बहुत शुक्रिया जी। Thank you very much, Chairman, sir, for allowing me to participate in this discussion on the demand for grants for the Ministry of Ports, Ship and Waterways. I'd like to begin my discussion with a quote by the famous British economist and Nobel laureate Ronald H. Hose. Once said, quote, "If you torture the data long enough, it will confess to anything," unquote. And I find more meaning after listening to the speeches from the members of the honorable members from the Treasury benches.
And why I would like to highlight this quote here is, after a lot of trumpeting its own, about boasting its own welfare measures and all policies, only in the numbers on the papers, in the social media, I could see a huge difference between what is showcased by the union government in terms of data and the actual quality of life that citizens are living in the backdrop of economic exploitation and socio-political inequalities. And equality is not a chimera, my dear sir, respected sir. So I would like to point out one important index. In the UN-sponsored Happiness Index 2022, out of the 149 countries, India sadly can occupy the 136th rung in the ladder. And why is it so? Because the union government is just supporting one part of the corporate sector, the big corporate wallas, totally neglecting the weaker section of the society, particularly the native tribes of our country. I'll tell you the reasons for that. With three special issues, I would like to highlight my point. Tamil Nadu's has been gifted with 608 fishing villages dot the state's coastline. They harvest over 500,000 tons of marine products every year, making it the 5th largest fish producing state of the country. But look at the plight of our Pulicots fishermen folk. It has been elaborately stated by my fellow honorable parliamentarian Dr. Jayakumar regarding the Kattupalli expansion of the Kattupalli ports. But for the persistent resistance by the Pulicat women, also the Tamil Nadu government's resistance, it would have been implemented by this time. And who is the beneficiary? The cat is out of the bag. It is mainly directed for the advantage of the Marine Infrastructure Development and Private Limited, a subsidiary of Adani Ports. Now I can point out to this august house on which side of the scale the union government is trying to push up. The same cases can be pointed out in the development of a new port, the NIM port at the Ramandurai seashore. And I would like to request the Honorable Minister to consider the plight of the fisherman folk. See, if the NIM port is being established there, the project would displace over 50,000 fishermen families. The 6-kilometer long breakwater structure to be constructed as part of the project would cause severe sea erosion affecting 27 villages. The second issue I would like to highlight is, sir, as a strong federalist, our Chief Minister, Thalapathy M.K. Stalin, he is no less a patriot. He is a staunch patriot, but a strong federalist. He has registered disagreement with the new draft Indian Ports Bill 2021 a year ago, since the bill diluted the powers vested with the state. And the state governments will not have any major role anymore. The Ministry of Ports, Shipping and Waterways has framed the draft bill to modify the current management mode of minor ports, and thus our Chief Minister took up the issue with the Ministry for Ports and Shipping, strongly opposing such steps to reduce the autonomous role of states in regulation and management of minor ports. Our Honorable Minister was proudly saying that in London Museum, Indian ship is being displayed. Proud Tamilian, we have a rich heritage history of Rajaraja Chola, King Rajaraja Chola, who had a fleeting warriors conquering the world with having the Tamil Nadu, the coast is a major shipping port, He was called the Sapta Samudreshwar. Exactly. Please. Thank you, Chairman, sir. And he was reigning supreme against, when Ashoka was here, he never submitted to him, against Chandragupta Maurya, against Aurangzeb. Okay. Raja was there. And there's a proud villain, I'm proud to quote him here. The third important issue is, say, the Sagarmala, much has been commented about. The ministry had projected the total requirement of rupees 690 crores under the broadhead Sagamala. However, only rupees 412.79 crores has been allocated. Even these 412.79 crores is not for the Sagarmala alone. This amount also includes allocation of rupees 52.789 crores for Andaman Lakshadweep Harbour Works for development of minor ports. What it effectively means is that against the projected demand of rupees 619 crores, of which every treasury bench member has been trumpeting about, the allocation made, sir, 1 minute, to the Ministry of Shipping, Ports and Waterways
Flagship program Sagarmala is nearly 360 crores. It is just 52.17% of its projected requirement. Sir, when multimodal transportation and Gati Shakti were the buzzwords of the finance minister's budget speech, this reduction in Sagarmala reeks of hypocrisy and lack of real intent on the government's part. Our Prime Minister has tweeted about the country's economical, industrial progress with all the numbers, rosy numbers. But I would compare it with the Goebels' data. Out of the 44 Sagarmala projects under various stages of development, no funds have been released for as many as 31 projects. Sir, I would like to conclude with a quote by C.D. Burns. I quote, "There is a vast difference between giving out of benevolence and supplying a legitimate demand." There is a vast difference between giving out of benevolence and supplying a legitimate demand. I would request the Honorable Minister and the Union Government both should balance both these two aspects, benevolence as well as supplying a legitimate demand, and deliver its goods to the public, not merely as a benevolence, but as a due right of the people. Thank you. Shri N. Redappaji, please be brief. I'm again and again Honorable requesting. Speaker, sir, thank you very much for giving me an opportunity for discussion on the demand for grants of the Ministry of Ports, Shipping and Water Ministry. And At the outset, I would like to congratulate the Minister, Sri Sagarmala Sonawaliji, for inaugurating just last month a Center of Excellence in Maritime and Shipping Building in Visakhapatnam with an aim to provide skilled manpower for coastal community development. Sir, I sincerely hope that the project attracts the talented youth from across the country and builds the ecosystem of maritime education. Sagarmala projects in Andhra Pradesh have been moving quickly. Sagarmala port-led development is synonymous to Andhra Pradesh, with almost 50% of all Sagarmala projects concentrated in our state. This is possible due to the cooperation between the central ministry and state government that have common objective to receive the economy with the mega infrastructure projects, that being inclusive growth under served regions. 50% of the 119 projects identified under Sagarmala project in Andhra Pradesh have already been completed. Some of these include fishing harbors, port road connectivity, four-laning highways, coastal berths, and many more spread across Krishna, Nellore, Kakinada, Visakhapatnam, and East Godavari districts. Visakhapatnam Port Trust, while Visakhapatnam Port Trust is receiving loans amounting 207 crores this year for various projects to develop the port, we request the government to consider an element of budgetary support. In addition to the loans, Port Trust raises, invest in major ports, make them to world class. Regarding green ports, the Andhra Pradesh government is developing greenfield port at Bhavanapadu, Machilipatnam, Ramayapatnam under landlord model for increasing port traffic from 150 MTPA to 250 MTPA by 2025 and 400 MTPA by 2030. The Andhra Pradesh government has urged to center to provide grant of any the three non-major ports and sought to at least 25% of the total outlay of rupees 14,000 crore as central assistance. This ministry did not take any demands regarding the same. Capacity boost. Non-major ports in Andhra Pradesh, such as Gangavaram Port and Kakinada Deepwater Port, are functioning at suboptimal efficiency. The cargo handled in such ports is below the rated capacity. This has been made by worse COVID-19, where the global exports and imports were drastically affected. Central support is needed to boost functioning, and need for a coherent policy to improve our exports and imports through waterways is needed. This requires sensitivity towards the
rising transport costs due to fuel prices and better port and road connectivity. Vacancies in Visakhapatnam Port Trust, sir. It was found that in 2021, there were 1,112 posts vacant out of total 4,003 posts in Visakhapatnam Port Trust. The ministry stated that the vacancies would be filled after the number of vacant posts was revised since digitization and mechanization had decreased the need of some posts. It is unclear whether this has been done as it and when it will be done, if it is had not already been done. I request the Honorable Minister to support the state of Andhra Pradesh in all inactivities, initiatives, and sanction the above mentioned demands in the earliest. Sir. Thank you very much, sir. Thank you. Shri N.K. Premchandran ji. Thank you very much, Mr. Chairman, sir. Sir, I fully support the observations made by my learned friends, Sri Shashi Tharoor ji and Madam Smriti ji, regarding the shipping sector or the demands of grants for year 22-23. Sir, my question, which I would like to put at the time when the Honorable Minister for Health and Family Welfare was regarding when, yes, I fully respect you when you are the minister for this. You have convened a meeting on 30/9/2020, in which the project was the Ministry of Shipping is preparing a Sagarmala Samruddhi plan for the overall development of the coastal community and the coastline. And it was a video conference since it was COVID-19 pandemic. We have all participated, all the MPs from the coastal area, we have participated, and we have made much research and submitted a detailed plan for the coastal development of our constituency. And I myself also have submitted a very detailed project plan submitted to you as the project called the plan for the overall development of the coastal community. But unfortunately, I would like to say, even the minutes of the meeting has never been received by the MPs from the coastal states, and nothing is done on the basis of the conference which you have held. I would like to know from the Honorable Minister, what is the fate of it? What is the future of it? Anything has been done on the basis of the discussion on 30/9/2020, held by your predecessor, Honorable Minister Mansukh Mandaviya ji. Now he is the Honorable Minister for Family and Health Welfare. That is the question which I would like to put. Sir, coming to the demands for grants, I fully support the observation which I have already mentioned. The ports, shipping, and waterways plays a significant role in the future transportation sector. So all these three sectors are cost-effective, eco-friendly, and more safe compared to the road traffic and also the air traffic. So the flagship program of this government, NGA government, is the Sagarmala Project, which was declared in the year 2015. Sir, you may please see the Ministry of Shipping has prepared and announced this national perspective in the year 2016. And this national perspective, since its inception, the institute is within the vicinity of